I remember. Alright, well we get to see multiplayer and Warzone 2.0. What are you expecting? What are your big expectations from this new iteration of Warzone? I'm excited. I'm excited to see the map. With Caldera, there was a lot of like elevation, and I liked in Verdansk how it was like a lot of buildings. So I'm hoping to see a lot of like buildings for like building fights because I'm a close range player. So that's what I'm looking forward to. Hello Avin YT, welcome to the stream. Hello Hustler, welcome to the stream. Hello Plank Boy, welcome to the stream. आज जल्दी कैसे? आज यही थोड़ा सा Warzone देखना था. Sorry, वो थोड़ा Instagram पे था. Hello everyone. Hello, hello. Welcome, welcome. ये क्या? Hello Rasik Modley, welcome to the stream. Finally Warzone mobile here. Yes, let's go. अरे Warzone का इवेंट है तो इस वही तो टाइटल में देखे नहीं, Warzone मोबाइल वर्ल्ड फर्स्ट रिवील पार्टी. सोचा थोड़ा देख लूँ क्या क्या कैसा गेम प्ले दिखाएगा. बोला ये Warzone का गेम प्ले दिखाएगा मोबाइल वर्जन का, तो थोड़ा देख लेते हैं क्या दिखता है. तुम भी आए. हेलो विल्सन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. मैं पार्कर का देख रहा था. अरे पार्कर भी है ना ऑनलाइन. सबको ये ऑनलाइन सब यही चला रहा है. मैं देखा सबको यही चला रहा है. मैं सोचा चलो मैं भी चला देता हूँ. भी सब यही यूज़ कर रहा था. मैं बोला चलो भाई, हम जब सब बहती गंगा में हाथ धो रहा, हम भी चला देते. अरे हाँ, वो पार्कर का हम देख रहे थे, बहुत देर से देख रहे थे. वो मतलब वो खेला भी है, 1-2 गेम खेला है. उसके बाद फिर जब 25 मिनट बाकी था ना, तब से वो बैठा हुआ है. 10 बजे से वो बैठा हुआ है. तो गेम नहीं खेलूंगा. बस वॉरजोन का है ये. थोड़ा सा रिवील देख लूँ कैसा क्या गेम प्ले है, उसके बाद खेलेंगे. एसएनडी मल्टीप्लेयर है क्या? देखते हैं. ऐसे मल्टीप्लेयर तो नहीं था मेरे ख्याल से. उधर उसका तो 2.7 लाख देख रहा है बोल के. We're a team. All of us. Let's go get him. क्यों तेरे जी बोल रहा है. Warzone on mobile. Listen up! These guys on the ground, they are your brothers now! Yes, sir. The beginning. Hello TikTok वाला सबको everyone, रिंग लाइट लगा and के दिया है. welcome to Call of Duty Next.
Keeson Whitey, welcome to the stream, I Keeson. am Johanna Ferris, the General Manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. Next Friday One release है. focused, of course, सही में on delivering more fun and हमको लगता है ना innovation, 1 but अक्टूबर को also करेगा. state-of-the-art 1 tech अक्टूबर को advancements ये built to COD support मोबाइल भी a हुआ more था ना connected ये 2 Call साल of Duty पहले. community than ever before. So just know तो that what we maybe share ये today soft launch across अभी कर Modern देगा. Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we इसलिए इसको carry to take ग्राफिक्स Call of Duty to खतरनाक even दिया higher इसमें. heights in the years to वो तो come. शायद लगता है पीसी वाला दिखा Ultimately, रहा था. though, देख रहे सबको we पीसी know लगा के that बैठा you, दिया है. our players and fans around the world will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing God, this on the eve of our Modern PUBG Warfare 2 नहीं. beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. They will finally get their hands on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce, alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call I'm of Duty. under the water, Pat, please welcome. help me. Thank you, Johanna. Ah, the It's so exciting to be Akman. here with all of you. It's been such a journey to get to this place. Akman You know, said this to me. on the 2 साल franchise, नहीं है. I always get asked by people, or 3 साल हो regularly get गया asked by COD. people, हाँ ये अभी 3 साल हो what are the जाएगा. areas हाँ. you focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving and innovating on ये तो every area of the सेल्फी ले game. रहा है. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on. Things like third person. Things like where we've innovated in the space of Battle Royale. We've got an Yes. all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts of Yes, sir, AI. And it goes on and on Yes. and on. We've got mobile connected with progression and Warzone. everything else across all of the games. And it just goes on and on. But you know what? It इधर all आके comes सब back to one सेल्फी thing. ले रहा है जी. It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore player or a casual player, whether you are somebody who likes to play with your friends or you like to play alone, wherever you played, be it on console or PC or mobile, however you play, whether you're a camper or a slayer, we've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that and play that. सबका फोन सहने को तैयार है ना भाई. Absolutely. फोन अपना ready fun is रखना. ये definitely सब what तो we're going to be ठीक है. heavily focused on. ये सब तो इसका And I'm काम है. particularly लॉन्च excited कर about देगा. some of the social features Dr. that are coming as Disrespect part भी of है this इधर. launch. Things हाँ, like वो भी होगा. proximity chat and new gulag twists. सबका There's definitely सबका going फोन to ready be है ना. instances where players will interact not only with their own squads, but may even have Dr. to work together Lupa. with other Lupo. players in unexpected and pretty fresh ways. ये We've तो already अंधेरवा में seen some करिया चश्मा hilarious पहन के आया है. interactions, in fact, during play sessions, and I can't wait to see how these new ways to connect एक evolve तो over इसे time. बॉबी Now, Pat, what can you बॉबी tell us बट about ये weapons? असली है. ये Warzone Oh, मोबाइल wow. टेस्ट करेगा. So we've completely innovated in the area Bobby of plays. connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So Yes. connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. नहीं, We've पता नहीं connected हम then कब the बैठेंगे body उधर. to the hands on the gun. तो हाँ, अभी Again, रहते तो हम भी with some सेल्फी लेते ना sophisticated, सबके साथ. inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, when wherever that gun is pointed, however एक it's लड़की भी pointed, इधर the बैठी bullets है are coming कॉर्नर. out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And इसका that's तो before I चेहरे even नहीं get into दिखा. what we've done with the new gunsmithing and how you build your weapons and the platforms, etc. But look, Staff, tech. you're going to play it, and I hope you love it like we do. All right, बहुत well, सारा we've taken up आया enough जी, time, but बहुत before सारा they आया. kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So, जाओगे जाओगे with the कीजिए beginning भाई एक दिन of हम Modern जाके Warfare 2, साथ में and वहाँ then shortly देखेंगे after that, खेलने. Warzone 2.0, इधर भी and then खेल very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun, and we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what
What play challenges can you give us beyond just winning? Which, anyway, I won't go off on that. But TikTok we've वाला got a सबको whole ring light लगा के series दिया of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone, or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. And believe me when I say, everyone in the match will know when you're on them, and if you prevail at them. So look forward to that. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. ये शांत रहो सब शांत रहो देखो देखो Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. अरे अंधेरा काहे हो गया? अरे ये अंधेरा काहे हो गया? Locate the prisoners and move them to extraction. Enemies above. Field charge. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. On cover. Keep going. नहीं कॉपीराइट थोड़ी मारेगा उसका प्रमोशन ही तो कर रहे हैं ये सब का कॉपीराइट नहीं मारेगा कॉपीराइट मारेगा तो कल मेल आएगा हमको अभी कुछ नहीं करेगा अभी मस्त देखो अरे Get ready, team. We have never seen a war zone like this. The world is a vampire. They're behind us. ये तो Warzone मोबाइल में दिखाया था ऐसा प्ले स्टोर पे अरे भाई लॉन्च होने के पहले ग्लिच कर गया I'm on my way. अरे प्री ऑर्डर इसको प्री ऑर्डर से पहले get early access to the open beta. फिर यही चला दिया We got intel reports of Hassan and the तो cartel. वेरी पूर्वक बना रहा है Terrorist cells all over the globe. MPTTP मोड में भी होगा ये कहाँ से आपको न्यूज़ पता चल रहा है ब्लैंक भाई They have an army, but we have each other. The world is a vampire. और ये घोस्ट मस्त लग रहा है नहीं अगर कॉड मोबाइल तो ये Warzone मोबाइल तो हमको लगता है ये TTP में नहीं होगा क्योंकि वो स्पेशली लिखा है FPP देखे है ना प्ले स्टोर पे अगर TTP में होता तो क्यों लिखता वहाँ पे FPP या फिर TTP भी लिखना चाहिए था Enemies above. Field charge. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. अपने सोर्सेस अरे ये क्या चीज था कैमरा नया क्लास आ गया है कैमरा Do not let them cross the border. आज तो बॉबी ये सब खेल लेगा
Warzone is पूरा FPP game. It's not for BGMI lover. हाँ वो भी मैं भी बोल रहा हूँ कि उधर स्पेशली लिखा हुआ है FPP. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. Warzone का दिखाओ भाई, Warzone का. बॉबी ये सब आज खेल लेगा पूरा Warzone, मजा ले लेगा. अरे इनविजिबल भाई आपका पार्कर नहीं गया? पार्कर अभी गाड़ी पे बैठा हुआ है, देखे उसको नहीं बुलाया क्या? इनविटेशन तो गया था. इनविटेशन तो पार्कर को भी गया था. हाँ हाँ I'm on my way. अच्छा. Pre-order now and get early access to the open beta. And there we go, Call of Duty fans. The trailer's so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this पार्कर भी अपने चैनल पे इसका स्ट्रीम कर रहा है. हाँ इसी का स्ट्रीम कर रहा है. फर्क भी तो घर पे ही है. हाँ फर्क तो नहीं जाने वाला था, वो तो उसी दिन बोल दिया था जब इनविटेशन उसको गया था. सुनो ना कुछ तो बोल रहा है. Who are bringing Modern Warfare 2 to life, guys? We have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But before that, we also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward. और क्या सबको मिला तो नहीं गया, हमको मिला तो हम दौड़ के पहुंच जाते. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level. There's a lot to get through today, guys. You saw that trailer. Let's go with the philosophy, Steph. Let's stay high level. What went into the creation of the game? You said it precisely. There is so much. This game has just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home. The community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of what Modern Warfare 2 is. And it's a dialogue that we hope to, continue, especially here today. Well, we've got so much in store with this MP experience. आज लगता है उस समय टूर्नामेंट करवा देगा क्या? इतना लोग बैठा कस्टम करवा देगा. On this franchise, we're in good hands. Indeed. Okay, so Jeff, well, I don't know where to start anymore. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about. And let's stay high level for now, because there's a lot of details, friends, juicy details. Sure. I mean, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky. What do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? And so we came up with a few methods, one of them being player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people will say play styles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels, and these are defensive players that want to just kind of hold down the building, maybe keep a little overwatch. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. So they're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. Sounds like a lot of fun. Stephanie, what are some of the new features coming to multiplayer, some of the new stuff? Stephanie naam hai, multiplayer expert hai wo. Oh boy, there are a ton of new features to dive into with this game, but we really pushed forward even the most fundamental aspects of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2, and it's been really amazing for me to come on board this past year and see these innovations coming to life, to hear Jeff jump into, breaking down the 1v1. And personally for me, water. Our water, I've seen the memes, we love water. It's really hard to make in games. But the aquatic combat, some of the things you're able to do with vehicles in the water, I think that level of immersion is really going to speak to fans and has been something that I've really enjoyed playing the last couple months. Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, can we go into some details about our water-based adventures in MW2?
Yeah, I mean, last game we really wanted to add water, and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk we froze the rivers and we made the outskirts just to kill Trigger. In this game, as soon as we started Modern Warfare 2, we leaned into water, both visually, beautiful caustics, there's waves with white caps, but we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater, otherwise you can't use your primary weapons. But it's also a nice cover or evasion mechanic. If you're getting shot at, you can dive into the water, and as you get deeper, it gets murkier. Like the farther you are from something, you can't see it. And so it's been super fun for us to dig into water and अगर really ऐसा रहा focus on invisible what water वही है could be. Warzone मोबाइल का You saw the मजा ही आ boats and जाएगा the मैं सच mine बोल that रहा हूँ floats, and every even piece of FPP भी equipment रहेगा ना has तो been मजा आ filtered, जाएगा like how does it work through water? Like we had to look at everything in the game and say how does it work in water? What's the best version? Our vehicles will just slowly submerge. Yeah, really would instead of blinking out. Yeah, everything. Yeah, a lot of details. The behaviors are awesome. Oh my God! Well, I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system, Joe? What have we got? Well, you know, last game we did mount, and we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, as you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. The other really cool thing is the dive is just high enough to let you get through a window. So if you throw a grenade up into a building, second story, often you'll see... You know, like rats leaving a ship, diving out through the windows, and it's just another option for players in combat. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm gonna save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite items that we're going to be throwing at each other and equipping and using and all sorts in the next game? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge, you saw the shock stick. This is Warzone mobile. You can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys and basically inflates like a car airbag going off. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom! It's going to shut down everything. And I can move in, and clear that room. Camera भी लगा हुआ है. Camera लगा के. But it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. And there's so much more. This is the TAC cam too, which you guys just saw, which to me is a personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates, so you can. Kind of like a अच्छा वो सब क्या कर रहा होगा जो अभी सब बैठा होगा ये सब बतियाने में लगा ले देखो ना. Your team. So it's I expect to see a lot of fun. There's so many toys and new tools that we're like we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and Core MP, and it's pretty awesome. Oh my God! Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me. I mean, that's one element to look at now. Also gunsmith, brand new gunsmith. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we, level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? Yeah, so the new gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross progression. अरे नहीं रस्सी किधर कोई दिल पे नहीं लेता सब जो भी है सब अपना अपना बोलता है ये दिल पे लेने वाला कुछ बात ही नहीं है इसमें दिल पे लेने वाला क्या बात हो गया weapon, there will be some shared attachments through progression.
And I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. I know we all love the gun bench from 2019. मेरा है भाई कि हमको खेलने से मतलब है, हमको सब खेलते हैं। So we've been hearing ये भी आएगा, ये भी खेलेंगे। ग्राफिक्स देख रहे हो तगड़ा। This is very, very cool stuff. Can you dive into those details though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith. We were like, okay, what if you could take an assault rifle and make it an SMG? And that was our driving kind of like motivator for that system. And we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns. And it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect weapon for me. I think maybe the simplest way to think about it is a gun tree, and each time you hit a branch, that's a receiver, and they grow out of that. Yeah. Yeah, and that's, you know, we wanted to ground that in reality. Functionally, a receiver, you know, is based in that, changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out the perfect weapon for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, you know, situational combat. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4. And the weapon vault maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. So we've heard you talk about the Frankenprint. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, you know, project for our teams to design these, but it is the ultimate weapon blueprint. And even better, you can unlock the entire Cinder weapon vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2. Available in beta. Available in beta, so we can rock with that thing all weekend long. Okay, so Gunsmith looks incredible. Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools to play with, equipment, weapons, maps and modes, though. Let's get into this one. Let's get into the design team, you know, the philosophy, I suppose, behind building out maps. I suppose, Jeff, this is for you. Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for quite a long time. I read about that on the internet. Yes. But, you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest. And within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War, and a bunch of others really well. And so, you know, stepping back from this large map and looking at how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter experience to contrast all this big world kind of exploratory gameplay. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined, and I think fans will really enjoy how quick they play. That sounds... A lot of diversity in those maps as well. A lot of visual variety, some colorful maps in there, and I think they feel really clean. In ways I didn't imagine to be moved today. Excellent stuff. I might... hey, it's the first time for everything here on air. We've got some of the maps that we are going to be seeing in MW2. Starting with one, we've got a real fun one here, guys. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sarif Bay? So Sarif Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and नहीं अभी तक तो ऐसा ही हुआ है प्लैंक वाइज जैसे कि PUBG का आया न्यू स्टेट उसके साथ भी ऐसा ही हो गया Apex Legend तो ग्राफिक्स में सब उसको नहीं बोला कुछ लेकिन उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड था उसके साथ भी यही खेलोगे कोई खेलता नहीं है ग्राफिक्स तो नहीं खिला है सब उसका है अभी अलग उसका पीसी का बहुत क्रेज है Apex Legend का लेकिन हमको नहीं लगता COD मोबाइल Warzone के साथ वैसा होगा हमको लगता है इसका चलेगा describe the rooftops there on this map specifically as like a separate ecosystem. You can kind of migrate that entire vertical. You can go up there and just
hang out and fight other snipers. All right, well, that looks fantastic. Jeff, okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. Do you mind giving us some details on this one? Sure. Mercado बोल रहा है 6 versus 6 is है. a little street Multiplayer में ये market Modern in a Warfare में historic 6 versus 6 section होगा क्या? Our एक story और बढ़ा behind दिया. this is, you know, the authorities have some intel that narcotics are being smuggled out of a warehouse, and they're going in trying to. Hey find JP, and welcome seize to the it. stream, JP. This Oh map JP, plays is that really you fast, or and a lot of action right down that center from lane. Drobo, right? The Mercado is a very dangerous neck of the woods. Welcome, so welcome, watch JP. out when you're playing in the beta. It plays fast. Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic, and again, interesting to see you know how that ties जो into hardcore campaigns and MP whatnot. वाले All sorts बंदे of हैं fun वही games mostly ahead of us. खेलेंगे Looks इसे. amazing. Battle maps, core maps, 6v6. All अरे this नहीं looks प्लान कोई fantastic. तो But let's मॉडर्न go back वॉर to the ये modes. We've seen some maps. Warzone मोबाइल What में about the modes ये being नहीं दिया played ना, on MP नहीं battle दिया maps? शायद. We will have the return of Ground War. मेरे But we've जहाँ got a तक new लगता है हमको. large-scale mode that को you've बोलो कि alluded टॉस to, करो right? और Let's talk मैच Invasion. स्टार्ट करो. So Invasion is it's a big war map. It's like it's Big War TDM, or we तब तो affectionately प्लान कोई call it पत्ता ही the काट ship कर in रहे हो Ground क्योंकि War. इसमें MP नहीं It's देने 20 वाला to 20 मेरे ख्याल players, से. but Warzone there's वालों close to में. 20 AI on each team. AI are coming in fast Yes, roping, they're welcome, coming out welcome, medium JP. birds. And it's this high action I'm mode. good, JP. It's How super are you? fun, How but you it's also doing? really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, hey, get to B, you know, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in multiplayer. उधर वो सब खेल रहा है जो बैठा है कि वो सब भी ऐसे ही बैठा है सबको सुन रहा है. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, you know, we took the name Ground Yeah, War JP, from a Warzone playlist looks in awesome. MW2, and that was just large-scale TDM and DOM. And we kind of did the DOM in the last game. Are you and now excited we're for able that? To add kind of Warzone? the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that that old playlist. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome, man. ये Warzone 2.2 भी आ रहा है तो क्या Warzone को हटा देगा पहले वाला को? What have we got? Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta in Prisoner Rescue and Knockout. Prisoner Rescue. Okay, let's go into Prisoner Rescue first, Joe. So Prisoner Rescue is an attack mode. It's a round-based mode. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out, and they need to keep hold of them. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pick them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapons. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way that we give the attackers an advantage once they grab that prisoner is they get a radar sweep for their team. Prisoner mode. इसमें 6 लोग खेलेंगे जैसे हम इनविजिबल भाई और ये एचएस भाई सब खेलेंगे तो एचएस भाई इनविजिबल भाई को prisoner बना देगा. Back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding adrenaline pushing mode once you grab that prisoner and try and get them out. Yeah, JP, I'm gonna stream today. I'm just waiting for Warzone mobile reveal. After that, I'm gonna play COD. Which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and also sort of the strategic revives that happen. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates. And, 1 million की watch I've seen आएगी some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play ज़्यादा it yesterday. It was excited लग amazing. रही है. Incredibly fun, and I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing that third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. What are the details behind this one? We got a little teaser of it on stage from Patrick, but what are the details? ये इनका you saw a little Intel hint था. of it in the trailer too. It's been a pet project for us, right? Blank We've भाई always का wanted to do Intel तो यहाँ पे third-person, काम आ रहा है. Third and person view all आ over रहा है working Modern on all this other Warfare में. stuff we've been kind of lifting up and doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third person. In the beta, we're playing it in Hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR. And we have
you know, camera work. The camera collision's When going our to be game worked. is down. Handles tight spaces. Not There's now a water available, camera. There's an JP. interior Maybe camera. after a You can week. feel the weapon shake when you're firing with it, and it's just we've put a lot of work into it, and we're excited for people to give it a try. Incredible. I can't wait to see what third-person COD feels like in 2022. Sexy skins and everything. This is a lot of information, Steph. Like, there's a ton here. I tried to warn you. Yeah. They were delivering a lot of new features for you guys to USA, try out ahead of release. Yo, and MDR, I said welcome we to were the gonna stream, be bold brother. with this beta, and we are, but there's even more to come at How launch. are you, so MDR? This is just a taste. How is this just a taste? How can there be even more? I mean, We haven't even got to Warzone yet. we're not even okay. Okay, so what about this year's third mode? So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode and will be focused on 2-player missions, asymmetrical in game design. So think 1 player on air support, 1 player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at, you know, some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about Special Ops in the months to come. Steph, you're saying I should be looking now for a It's special my day ops off. partner. I'm Sitting here right chilling. next to you. Ah, nice, Yes, MDR. you are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. What's that? Indeed, Mohammed we Mustafa, do. welcome to the Let's, stream. Roll the clip. Are you excited for the Warzone, MDR? You gonna play this game? Warzone 2.0. Empty-handed, I was born. Oh. Empty-handed, I will ascend. Blade or bullet, ये तो fist, cheating है, ये तो पीछे से आ रहा है. spear, stone, or arrow. These are merely tools. Oh, thanks MDR, thanks for joining. The one to When it's fear. dropping? I don't know. They're gonna say like maybe next week or something. Pick Miles ISO. Third person है तभी बोला PlayStation पार players कर will बोल रहा receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family, just like me. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day 1 for all who pre-ordered हमको through भी the लगता है कि PlayStation वो Store. Plus, he comes with third a person high-level देगा weapon क्योंकि blueprint, playable in पता है multiplayer ये and Warzone 2.0. Steph, badass. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will wanna be see locking becoming Oni gameplay. main Let's day go. one What are for why this you game. talking, It's guys? been really awesome to see Let's our go. narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think Samurai. the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. All right, Steph, we keep talking about all the क्योंकि things that, Apex you know, we Legend have भी to ना look FPP में forward to, था but, PC we में are missing quite a big one. वो We're मतलब missing the seasonally start मतलब of the week में आता है beta. जैसे So हम लोग for anyone who कैलकाटा wants to जाता है ना get वैसे early FPP first-hand look at TTP Modern जाता है Warfare उधर 2. And trust me, Apex you Legend Mobile definitely में want to. It लेकिन is immediately available around the corner for PlayStation players who pre-order any version. Early access to the open beta starts tomorrow, so make sure you are preloading right now. Now, also check out your screens, since here's exactly when you can play the beta on your platform of choice. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that if you pre-order the Vault edition of Modern Warfare 2, you get to use the red Team 141 Operator Pack and the FJX Cinder Weapon Vault in the beta, in addition to being able to earn this is in-game the rewards gift. for playing If all you sorts of cool swag. And don't pre-order. forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So wait, campaign a week early. All right, folks. I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 Let's plus go, guys. here, Let's and ready to watch rock the and roll. gameplay But now. first, Players we'll are be right ready. back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. हाँ Apex नहीं चला है. Call of Duty Next, brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Okay. Little Caesars, a proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 2. Okay. HyperX, official peripheral partner of Call of Duty. Okay. Play like a pro on the big screen with 144Hz VRR and AMD FreeSync, now on TCL 6 Series TVs. Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. It's about
We have 200 creators here on site, marching down the green carpet with one mission in mind: to be the first players to play Call of Duty Modern Warfare 2. Nice work, not So enjoying much the in this ladies. game. There is almost too much. This is like one of those days where I enter and my hopes are so high. And what are you looking forward to most when it comes to Warzone 2? Prisoner rescue. I'm looking forward to using Pura that seta inflatable dena. soldier decoy to mess a lot of players. Kill streaks, I think. I'm honestly here just to learn as much as I can to prep for alternate of Optic because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back. A map that everyone can play. Honestly, give me a There are broken lots shotgun. of Mountain Dew. What's your favorite game Apex तो mode? मुझे and Power Mountain Rangers Dew वाला flavor कार्टून लग combo? रहा है. Search and destroy Code Red. Capture the flag, Code Red. If I'm going hard with the boys on a long night at S&D and I'm trying to get some nasty in-game comms, I'm drinking Baja Blast all night. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, Terminal. Most people have Terminal nostalgia. Terminal. Terminal, 100%. I just replayed that recently and I realized that spawn trapping is horrendous. Easy. Strike. High rise. High rise. Terminal. What's your favorite flavor of Mountain Dew? I've grown up on Code Red, so it's still Code Red for me. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Dang, I was gonna pick Code Red too. Can I get a second one? All right. Baja Blast. Starting October 17th, unlock dual double XP, COD points, and also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. Whoa. Okay, I'm gonna buy Mountain Dew. Let's see what I get. Invisible Boy, let's buy Mountain Dew. Welcome back to Call of Duty Next. The Mountain Dew green carpet. God damn, it was beautiful. A lot of fun people out there. Everyone having a good time, and some incredibly well-dressed people out there, and some definitely not. Sweaty t-shirts abound. Here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer reveal trailer earlier today, and it does look awesome. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Snowden. Joe Seacott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are going to love it. Oh my good God. Real excited about this one. Again, there's a lot in this one, Jack. Where do we go from here? So MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. Like Stephanie said, they share the same mechanics, the same weaponry, and even more than that. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the globe. It brings together our philosophies on map design. It brings together new technologies in order to do it, and lots of artwork to make it happen. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Oh, here we go, a brand new map to explore and traverse. I can't wait. Stephanie, let's take a look. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. This is our new map for Warzone 2.0. It is a really interesting mix of geography. It is expansive desert settings with a mix of industrial areas, towns, a city, and of course, water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. But you're gonna find a lot of really cool elevation, rocky peaks,
caves, subterranean spaces. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made. And I am so excited for all of our streamers here to jump into Al Mazrah later today. It's huge. Look at the size of that thing. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of these points of interest. So when we set out to create these spaces, the team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between all the different, what we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. And so as the team works through these, they're trying to find some variety on each point of interest to make them something that the players will want to drop in and get the particularity of that single point of interest and find the place that they want to drop and where they want to play, whether it be a high elevation observatory at the center of the map, whether it be the big city that's up the top right, and whether they want to explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with geometry here. So we have in this one. Well, that looks familiar. That does seem familiar. And there's a river system that goes through all of this. So you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs. Here's one of our favorites, Sawa Village, which is colloquially called Sunken Town. I mean, I love to swim, so you find me there. I'm map is what really you guys good. think, Jack and Joe, on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think everyone's going to immediately drop today. I think some people are going to drop to Observatory just to go back to home. They're coming home. It's always nice. You're moving through the map and you kind of hit a spot and you're map, like, wait I know what this is. You have all these flashbacks. Yeah, there's a lot of nuggets in there for some old Modern Warfare fans. Yeah, I'll say Corey. I think that's gonna pop off. I think people will land around the edge so they stay in as long as possible in this match. But smart. We have some news for our edge of the map players coming up. All right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? I mean, the super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. Like, it's all of it's been built from the ground up for both. The slide, the dive, the water, like more swimming. Yeah. Oh. This is a great taste of some of the water combat. I can't wait to go full Captain Miller, you know, Apocalypse Now coming out of the water, knifing people. I mean, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. See the caustics on the bottom. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? Boats, tanks and all sorts, Jack. What have we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them, they react to explosive differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. And of course, we've got, you know, water vehicles. We've got वो लोग जाता था तो वो लोग तो बोर नहीं होता है केजीआई भाई वो लोग तो उधर टिकटॉक वाला रिंग लाइट में बैठा रहता ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. कम से कम उधर बोलते बोलते उधर का नजारा दिखाता that you can fly around. It's a moving platform with 3 doors. You can move a whole squad through the map. Wreak havoc. It is so cool. Oh my god. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know,
engage in battle from the window, leaning out, shooting, unless somebody blew off your door. That won't. That does complicate things, doesn't it? PTSD from Joe killing me many times in our playtests. Well, I hope the gas prices in Almaz are okay. I feel like there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much has changed. Is it still Gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? Well, what do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them in game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes! So it's coming. It will be in Warzone, and there's going to be some amazing clips. But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. I'm listening to that. The streamers love prox chat. They're like, yes! You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground. KJ रहते तो पूरा हल्ला करने लगते हैं. Start and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's going to go inside, go to the medicine cabinet, and get you something a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building, and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that'll have grenades and things in them. And you find these other crates that are kind of like, it's as if the military that occupied this space came through and dropped off military items. Those crates are always there. So you can always have this reliable layer to looting. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through Al-Mazrah, quite literally, like, have a route we plan, hit the gas station, gas up, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of VR's joke. Yeah, I mean, the circle's been a staple. VR's been really hard to move away from it, so we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits, into 2, 3, or even 4 circles. And then those circles kind of close down, and what it does is it segregates teams, and you have these micro battles in those circles. And at a certain point, you're like, okay, we've cleared out our circle, we think we're good, and then those circles merge, they come back together, and you have this very directed fight of, like, as the circles moving, you're like gearing up in buildings, you're like, here we go, it's about to kick off, and as soon as those circles hit, you have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay that we feel like is a cool world event that would happen. Like, oh, the circle's splitting, we need to do X. Crazy. Get in the car, we're going now! multi-circle hoga. What about the Gulag? Is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but... circle banega the Gulag, we've been experimenting Warzone with 2.0 but the current version of the Gulag that we have running right last now, merge hoga bhai ye kuch naya hai. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out, and after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the Gulag. So you have to be on your toes. Like, you're working with an enemy. There might be an AI here. You're picking up weapons. And we're excited for people to try it. And we're going to get feedback today, too. And like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal here. But there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So Strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al-Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next.
But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Right, Hustler, but it's confirm or FPP, deny sadly. It's finally time. I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ. Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. Hustler, पर ये Warzone मोबाइल का नहीं है, ये Warzone का है जो PC में आ रहा है, उसका ये सब to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. I don't know कि Warzone So मोबाइल DMZ, में भी ये सब. I can also confirm that DMZ is real. But we're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you, though, is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al-Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. ये दोनों के chest पे ये घोस्ट बना हुआ है. Or you can hunt other और players दोनों जो or side avoid side them में बैठे हो entirely. उसका कुछ Or नहीं. you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. Loot up, exfil, it's totally up to player choice there, and I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter, and we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, Ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. With the start of Season 1 across Modern Warfare 2. Mark your calendars, that's about 2 weeks That's gonna be available from 16 November. After Modern Warfare 2 launches. And we had 125 million players in the original Warzone. And I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al-Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. Let's talk about Warzone Mobile now. Come on, don't go anywhere just yet. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, yes. I promise. Then after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale, we got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. Call of Duty Next, brought to you by the GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. Intel, built for the next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity rewards. Let's go. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Jack Links, squad up with Sasquatch. Let's go, guys. Jack Links is good with it. Eureka Ergonomic, leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. कहीं लॉन्च डेट भी आज बता दे तो मजा आ जाएगा. ये क्या Warzone मोबाइल है? Warzone मोबाइल है क्या ये? Warzone मोबाइल इसी में दिया था. More players.
अरे ये तो Warzone मोबाइल में लगता है। और अच्छे यही है Warzone मोबाइल हमको लगता है। यो 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 यस भाई। What a jam-packed day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris, what do you have for us today? That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. Yeah. This is the real thing, and it's on your phone. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Warzone from wherever life takes you. Let me quickly point out the gameplay you're seeing today is still alpha, so it's only going to get better. And for Warzone fans, you will recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia. But wait a minute, Chris. Is that the legendary Verdansk? You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time from its hallmark vistas and these dense urban areas. They're just so much fun to play in. Wide open fields, ready for battle, and intimate, close quarters combat environments. There's so much variety in Verdansk. अरे हाँ खेलने आएंगे इनविजिबल ये भी Warzone मोबाइल का दिखा रहा है। Locations like Boneyard खेलने तो आएंगे and Superstore. Warzone मोबाइल का दिखा रहा है। Well, I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combined to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds, all those essential little touches are smooth and accurate. It's about creating an experience that's so true to form, you can imagine feeling that dirt compressing under the soles of your boots with every move. Or imagine those tiny shockwaves of recoil moving through your entire body with every shot. In Warzone Mobile, these are the kind of details that we care about that make the combat feel airtight and authentic. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying चलो attention थोड़ी देर बाद to आते हैं detail, and it's Invisible. finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than एक pure मैच खेलो मैं आ रहा gunplay. हूँ। For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash at buy stations. There's a ton of variety there, including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up, because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Yes, everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice like, you know, a precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either, because we have the gulag. So here players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player, and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before.
For this reason, we're pushing way past the envelope on high player counts to make sure each match is jam-packed with our signature style of combat. So we are supporting up to 120 live players in the single match. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live, human opponents. And that's our focus. So for anyone who's tired of playing with nothing but bots, we hear you. We're talking up to 120 real players ready to hunt you down with real human skill and real human emotions. That is Call of Duty Warzone Mobile. And we hear you in the crowd. Everyone's excited, and absolutely it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that, in terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other Battle Royale games on mobile, because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat are shared across platforms, so you can stay in touch with your friends, whether they're playing on console or PC or mobile, wherever they choose to play. I mean, that is so exciting. I totally get that. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons and operators you'll recognize from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around works as well. I really love to hear that. And as a matter of fact, I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? You know, that's a great question. See, the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. A lot of it comes down to tuning, and this is why we're supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile, and we're avoiding the imbalance that comes with crossplaying between mobile devices and consoles, or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game, we are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick-up-and-play experience that's accessible to all of our players. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, hey,
We got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now, you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn. Like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, we're going to unlock a super cool secret reward you're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code below. We are back. It's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Nameless Studio. What? Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. And you're telling me I could be in the airport playing Warzone now? Back in Verdansk? That's lit. Also, Al Mazrah, it looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Ali, Yeah. I mean, lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly. Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, how you feeling? no, 8 hours a day for years, it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles, the water, the boats. I mean, I was like kind of the proximity mine king for a while there, placing them under vehicles, trying to blow them up and set booby traps. And now you're telling me I could do them in not only land, but also the sea. I'm with it. It's going to be something, man. We really have seen a lot so far today. We've seen, Warzone Mobile, of course, multiplayer there, and a bit of Warzone 2.0. Cannot wait. But, guys, it's time to get into business. Let's now get into the command center. This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the command center, presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Xfinity customers, they can start playing Modern Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com/rewards to get your code for early access to the open beta. It's free and it's easy to join. Guys, I mean, every time I sit down, I take a breather, I'm like, there's so much. But first and foremost, guys, before we get into this one, there's so many streamers here. We need to give a big shout out to Intel, who's powering all of the streaming PCs here today. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. I couldn't believe it. Cloaksy is here. Like, the fact that he actually made the trip out, I figured they have to have something special. The fact that you have a dedicated PC to the streaming side and to the gameplay side, and it's set up for this many people. Intel, thank you. Ridiculous. This is incredible. It's incredible. Ridiculous. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you teased it a little. Yeah, you just played, a little. a little, yeah? We played a tiny bit. I can have an accent, too. She did. I'm getting mocked here. My bloody desk. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. It was pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet, coming together here in this crazy top-secret location. What can we expect? It's going to get loud. It's going to get incredibly loud. Yesterday, it was loud, and I believe like not even everybody had shown up yet. So now that we have a full building of all of these creators, all of these PCs, I'm expecting people to get up and start screaming, Miles. It's going to be insane. Clint, we heard Courage from like headphones on. He can be heard from space. Oh yeah, no, 100%. Like Bobby Pop, if he's on a subtrain or something, Lord knows what that's going to sound like. But my boy Tyler Blevins, Ninja here as well. But like, I think this is a testament to how pumped up everyone gets about Call of Duty every year. Like the fact that there are this many big name streamers in attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. I mean, this is going to be a real treat. It really is. I mean, and you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, all across North America, South America. We've got players all over Europe, Japan, Australia, you name them. We are all over here. Mobile players everywhere.
how do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking around doing the round saying what up to everybody. They're going hard, right? Like, I was talking to some of the Warzone guys, Repos. He's like, I'm here to fry. Zuma's ready to go. So I'm interested to see them with these new weapons and the gunsmith, what they come up with, especially our new game modes like Prisoner. It's going to be lit. Listen, as much as they're here for their love of Call of Duty, they're also here because they want that banger clip. Like, everybody wants, like, you know, like, you're trying to go out and fry some of these big names, get a clip out on social, your YouTube, whatever it's going to be. So, yeah, I'm sure people are going hard in the paint or falling to their deaths if they're Tim. I'm sure we're going to have a couple of those. I'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Dr. Lupo, one of our first here, and he's already down and out, but we are playing, I believe this is Hardpoint and Mercado, nameless. Yeah, you know, I didn't get to play this map yesterday, but one thing I just want to point out with this game is it's a lot more vibrant than some of the MW games that we've had in the past. There's so many more colors, and that's something that I always enjoy, especially with Call of Duty, is when it's more vibrant and you can see more on the map. I think sometimes you go dev to dev, and yeah, it's like you have like your more realism, like your grays and browns. Some will have a little bit more color, but like this map in particular, yeah, the second we saw. Like the fly through of this? Yeah. Today, but I was getting disrespectful with some people on the map, and I believe that you were in my last game, and the second I killed you, you left. I remember looking at the leaderboard, and that wasn't me. That was Ninja. A quitter, Miles. That was Ninja. Over to Courage now. He's having a good time. And you know what? Listen, he is, as much as he's like a fun, good-loving, like everyone takes a jack, it's just like this great-natured guy. He is one of those competitive human beings I've ever met. Like, he gets pissed, bro. Passion. Raging passion. And look, it's me on the right-hand side. No, it's not. It's Ninja. And I will have to say, to test to what Ant was talking about earlier, about the game mechanics, something else that I noticed that I don't feel like I felt in other Call of Duty games is how kind of realistic the movement with your gun is, if that makes sense. Like, there's obviously always going to be recoil, your attachment's always going to mess with that, but when you peek corners and stuff, the Oh, let's go. Wait, MDR. I'm gonna play in a bit. ASN. हेलो 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 कौन है भाई जो वॉच पे है हेलो हेलो वेलकम होम
अरे 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 कौन लड़की हो तुम? तुम कौन लड़की हो जी? कहाँ से आई हो? From where you came? कौन कहाँ से है? आए? कौन कहाँ से है? अरे अब्दुल भाई इधर लगा के वो स्ट्रीमर मोड में थे इसलिए नहीं कर रहा था एक्सेप्ट। स्ट्रीमर मोड में रहते हो। अरे तो क्लैन क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी? क्या कहते हैं, एक लेवल 1 की क्लैन ज्वाइन की थी यार। ऐसी रैंडम जो क्लैन होती है। अच्छा। थोड़े रिवॉर्ड्स मिल गए थे इसलिए। ओपी नूब को ना चाहिए। कल सबको लास्ट वार्निंग देंगे जो क्लैन में है, नेम चेंज करो नहीं तो बाहर। सही पकड़े। अभी लाइव वॉरज़ोन का वॉरज़ोन का भी कर रहा था वो, मतलब अभी भी चल रहा है। ये है ना क्या बोलते हैं वॉरज़ोन में क्या सीन हो गया ना अभी कि मैं अभी देखा लेकिन वो पीसी वाला बात नहीं है वो, क्योंकि अभी देखे थोड़ा सा वो एरोप्लेन ये सब देखा ना, गेम प्ले दिखाया तो वो वैसा नहीं दिख रहा जैसा पीसी में दिखता है एरोप्लेन ये सब। हाँ ये सच। हाँ पता है स्नाइपर का ट्रेनिंग कर रही थी लोटेक्स को जैसा क्लैन के साथ, ट्रेजर हंट के क्लैन के साथ। ये तो मेरा सर्वर आ गया। अरे नाम देखो ना कैसे एकदम, ये सीक्वल में ये पहले एक्सलायथ सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ओपी इनविजिबल उससे छोटा, फिर अब्दुल उससे छोटा, फिर नीपी टू उससे छोटा। DLQ पकड़ के खेल रही थी निपी। पिंग सबका हाई होगा। हाँ मेरा 60 पिंग चल रहा है। सही है। सर्वर मेरा है एक्चुअली, लास्ट का 90 आ रहा है। नहीं ये इनविजिबल भाई भी उधर ही है ना। अच्छा बाहर है। वंस पूछ रहा है कि ब्लैकआउट मैच मेकिंग करनी है मेरी टीम के साथ, अगले मैच में कर लेना। ओके कर लेंगे। करेंगे लेकिन आइसोलेटेड मैंने को बोल तुम्हारा टीम को भी आज पछाड़िए देते हैं बंद। रुको तुम प्लान भाई स्लॉट बने तो बताना। ओके प्लान ईरानी लॉबी मिलेगा ना, बताता हूँ। इधर ही पूछते हैं ना, लेकिन लॉबी ईरानी मिलेगा ना। हाँ लॉबी ईरानी नहीं हो पाएगा मैच मेकिंग आज, कभी और खेल लेंगे। तुम्हारी टीम आज बच गई, आज खुशियाँ मनाने बोल दो। और कुत्ता वाले मौत से बच गए। नहीं ऐसा दौड़ा के मारते थे ना, तेरा पंप को बॉम्ब बना के फेंकते थे। क्या आइसोलेटेड कोई मैप है? देखो ये क्या बोल रहा है। पूरा दिन इधर ही सोते रहता है, अभी पूछता है आइसोलेटेड मैप है क्या बोल के। क्या ही बोले। ये वंस नाम वो नहीं तेरा चेंज ब्लैक करा। आउट एक मैप है क्या रे? वंस वो ब्लैक आउट को कोई बोलते हैं मैप बोल के, वो बता मुझे पहले। वंस के नाम का खौफ है। आई एम वंस ना खौफ खाता है बोल रहा। 3-4 क्लैन, एक दो नहीं 3-4 क्लैन। तो नेड़ गांड में मार के मार देते हैं तुम लोगों को। कितना क्लैन खौफ खाता है वंस? इधर प्लैंग भाई बोल रहे सबको मोर बनाएंगे। ओ भाई वंस अभी क्या का नाम क्या है रे? फिंगर खेलेगा बोलते हैं और कॉफ दिखाएगा। क्या आएगा? फिंगर स्लीव पेन के। कौन बोलता है? वंस बोल रहा है फिंगर स्लीव्स खरीदेगा और कॉफ दिखाएगा बोल के।
निब्बी का तो कल का गेम प्ले देख के लग रहा है अगला टूर्नामेंट में निब्बी को उतारा जाए। अच्छा अभी वॉरज़ोन टीटीपी में लॉन्च होता तो पूरा एक्साइटेड रहते। और क्या, मैं तो डाउनलोड करता था, मैं इसलिए मैं तुमको पहले ही बोला था। अरे यार वॉरज़ोन वो एफपी कितना साल किया था, अभी फिर वही लोग वही लेके आते हैं तो क्या करें। नहीं ग्राफिक्स में ये सीन है ना, ग्राफिक्स में कि वो वॉरज़ोन जैसा असली का वॉरज़ोन है ना वैसा उसका ग्राफिक्स नहीं दे रहा, ग्राफिक्स में चेंजेस है। क्या कर रही है निब्बी? एफपी में बड़ा खेलने का मजा नहीं, इतना बड़ा गेम तो मोबाइल पूरा सामने ग्राफिक्स वॉरज़ोन की ग्राफिक्स चेंज नहीं कर सकते जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी। क्या हुआ? जो ग्राफिक्स होते हैं वो चेंज नहीं कर सकते। आके बैठना हराम है, उधर क्या घूम के देख रही हो? किसका, कॉल ऑफ ड्यूटी का या फिर वॉरज़ोन का? वॉरज़ोन नहीं वॉरज़ोन का तो ग्राफिक्स मेरे ख्याल से अच्छा देगा ही, खराब नहीं देगा। अच्छा तुम जैकल लोगे? आज तो तुम्हारे जैकल चलाने के ये सब पूरा इम्प्रेस हो गया था। कौन खेल रहा था दोपहर में जी? सेंसी। आज ही जैकल से सुबह खेल रहा था तो पूरा स्क्वाड पे स्क्वाड खेले। सेंसी पूरा खुश। उसमें मार के क्या मजा मिलता है पता नहीं, और लेकिन बहुत खतरनाक है, जिसको नर्व करना पड़ेगा। खतरनाक है लेकिन उसमें मार के मैं बोल रहा हूँ अगर एनिमी भी हम लोग मारते उसमें मार के क्या मजा। You must stream on Trovo. Yeah JP, I'm gonna stream on Trovo like tomorrow. I have to figure out how to download like 2 platforms at the same time, because that's the app I'm using right now, StreamChamp, that's not allowed. नहीं drop पे चलते ना, मार दिया उसको। यार दूसरे जेट ने उड़ा दिया, देखा ही नहीं मैंने उसको मार। वो तुमसे भी एक्सपर्ट है लगता है। अरे बाप, तुम तो लगता है बहुत दूर मरा। आ रहे ज़ोन भी आ रहे हैं। JP, I have to figure out like how to do, or maybe I have to use different app so I can stream both places at the same time. कर लो जिधर चाहिए उधर कर लो। उतरने भी आ गया, जेट वाला आ गया बस। पर डैमेज का है। अरे खैर मना ये हम लोग मरे नहीं तो टपकाइल ही था पूरा सब। नहीं मैं तो पहले ही कूद गया, 14% हो गया। उसको लेके आते ठीक ना, आप लोग इधर रहिए। स्कैन कर दो अब उस टैग में, मर गया ऑलरेडी। अरे वैसे तो पानी तो एक्सपर्ट है, तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट होगी। तीन ये ना स्किल जरूरत है टारगेट अरे उसमें पूरा मैं वही पूछता हूँ, उसमें पूरा मार के क्या मजा रहे मार के शॉटगन ये ठीक है, शॉटगन का शिकार KR है भाई साहब। भाग लो स्क्वाड है लगता है। हाँ दो है तो मैं चलेंगे।
ये तुम रो रही है 200 था बोल के। क्योंकि तेरे पास एक्सटेंडेड मैग है, मैं कुछ रखा ही नहीं। ड्रॉप पे चलते हैं ना हम लोग सीधा इधर से पूरा। वॉरज़ोन में पूरा मस्टैंग चलाएंगे हड़बड़ा के। इनविजिबल भाई का वॉरज़ोन को छोड़ दे, अभी इधर चला दे। इनविजिबल भाई का फेवरेट गेम आ रहा है वॉरज़ोन। बचपन का प्यार। मैं तो डाउनलोड ही नहीं करूंगा एफटीपी में। तो टीटीपी में डाउनलोड करिएगा। टीटीपी है तो थोड़ा मजा आता है। नई जगह टीटीपी पूरा शॉटगन में मार रहा है एचएस में। लेना ना ड्रॉप। भी कौन सा टूर्नामेंट खेलने, चलो जाओ ले लो। तो कल हम लोग को गांड फाड़ा टूर्नामेंट बोल के। अरे क्यों गन नहीं आ रहा है? बैठे बैठे बैठे। तो 3 बार ले लिया नहीं है। टूर्नामेंट के नाम पे कल गाड़ी में घूमते रह गए, डर गए थे हम लोग पूरा, डर के नहीं जाते थे। अरे बात डरने का नहीं रे, बात लूट नहीं था ये। डरने का कौन सा, मारेगा तो लॉबी में जाए। लूट था लेकिन क्या था ना सीन कि ये टाइम नहीं था। जो इतना जल्दी जल्दी जोन खुला, जहाँ खड़ा होते थे जोन चलना शुरू। तुम मेरे पास M4 था, वो भी M4 नहीं, मेरे पास GRS था, वो भी 40 M। सेकंड मैच में मेरे पास 110 था, लेकिन क्या ही कर सकते। अभी तुम कहाँ हो? आगे चॉपर भी है। अगर नहीं रे एक तरफ नहीं मगर वो वाइन नहीं मारता है ना, आता था गेम। खेलो तुम खेलो कोई दिक्कत। एक इधर है कूदिएगा नहीं 2 बंदा है। अरे वो शॉटगन पकड़ के बैठा है। इसे तो बोलो उधर। अरे उतर गया था गाड़ी के ऊपर बैठा मैं, वो ये साइड में उतरने के लिए कुछ नहीं था। जल्दी आना जल्दी रिवाइव दी। अरे आ गया। अरे उतर गया इधर, तुम रखा ही वो ऐसा जगह पे। स्कैन करना मारने से पहले, मैं आके तुमको बचाऊं। भाग पीछे भाग, अभी मत रुक जा। क्यों रुक रहा है? उसको ये कर। अरे वो पूरा स्क्वाड है उधर। बच गए। अरे वो उधर वो स्टील का शटर था ना, उसमें ही था। मैं उसके ऊपर कूद गया, गाड़ी के ऊपर आके बैठ गया। हम उधर फंस गए ना। अरे उसको मार भी दिए। वो डैमेज था नहीं, वो अकेले था, उसका किल मिल गया। वो डैमेज था। सामने ड्रॉप है, उधर ही आओ। हाँ निजी तो किसको तो मार ले। सैया को हमारा आशिक को
लो इसको ही मार दिया मेरे साथ काम हो गया। अरे इसके साथ क्या हो गया तुम्हारे साथ? मुझे गाड़ी इसके साथ कुछ क्या? अरे आपके पास बंदा है। फिर वापस कहाँ उड़ गए? ये उड़ा दिया मुझे। वेट मेरा आँख शिफ्ट ये बार फोकस शिफ्ट कर रहा है ये कैमरा की तरह। लड़की है क्या हुआ? लड़की है क्या? अरे नहीं ये बार ये दूसरा जगह चला जा रहा है। अरे वो शॉपर किधर में निपी का टैग लेके आएगा रुक। नहीं उधर मुझे मैं लेके आऊंगा रिवाइंड दो मैं लेके आऊंगा रिवाइंड दो। का टैग कितना डिमांड है यार? अरे तुम कहाँ जा रहे हो अब्दुल भाई? मैं इसको फेंक दूंगा चॉपर को। 48% का टैग तो बहुत डिमांड है। अभी वहाँ जाते अब्दुल भाई तो फंस जाते। जैसे हम लोग कैसे इधर गांड मारने के लिए 4 लोग बैठे हैं। तुम जैते हमको बोल रहा पीछे खोलो हम तो बेंच भागे उधर से। जानते हैं हमको बस देखना था कि वॉरज़ोन यहीं पे एक जंप किया है एक बंदा निबी के साथ। वॉरज़ोन नेक्स्ट ईयर आएगा। निबी के उधर जाओ ना। हाँ वो इधर ही जा रहे हैं। और ये मेरे फ्रेंड में है 69। हे हेलो 69 ये मेरा फ्रेंड लिस्ट में है। अभी हम आए थे तो ये भेज रहा था हमको इनविटेशन। चलो अभी सेफ जन जाए उसका जाना था निकाल दिया। अरे इधर ही बंदा 1 मिनट। सीजन में ये के बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। ड्रॉप लूट लेना एक का लोड आउट भी तो मेरा तगड़ा है। नहीं ये सीजन में ये के भी बहुत अच्छा वो हो गया। वेट ना नहीं भी बहुत मस्त चल रहा है। पैदल चलते गाड़ी से नहीं अब जाएंगे। पैदल ही चलते। हट जल्दी कौन सा गन रखा है यार लोड आउट में? जाने ही नहीं था। रे पूरा दिखता हो। नाइस एमओ है क्या तुम्हारे इसमें? वेट हेलो राकेश भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। अरे पीछे जो अब्दुल भाई उसको बिजी रखो फायर करते रहो। नहीं उधर वो उधर यार वो शॉट गन है क्यों उतना नजदीक जा रहे हो? अरे एमो चाहिए था, एमो नहीं है। किसका एमो? ये भी इधर आओ मैं देता हूँ कुछ।
कहाँ गया वो सब? वो पीछे पत्थर का पूरा वीक है इसका, पूरा वीक है। खत्म कर, पुश कर, चल रिवाइव दे रहा है। तुम्हारे पीछे है, ये सब पीछे। अरे पीछे ए जा रहा है। 마가지오 카이로 스텝, 앵거 스텝. इनकी ये किल भी नहीं मिलते। इसका ऐसे सिस्टम से लगा है। शॉट ऑन। इधर है, इधर इस साइड में। एक तुम्हारे लेफ्ट में है, देख ले, राइट में। अरे यार इसको देखा ही नहीं यार मैंने। एक थोड़ा रिवाइव दे, तो वो उधर बिजी है, तुम इधर वो उधर रिवाइव दे रहा है। देख ले, वो दिख रहा नहीं। मार दिया उसको जो आपको मारा। भागिए। अरे यार रहेंगी अब। छोड़ दे जा। पत्थर के पीछे एक ऊपर है। कल के पीछे जा, कल फोड़ दे। किल कर। शॉटगन। जा कवर ले। आया। अरे यार that bitch. بین کردم بچه کاری باری من باید برم کار دارم. ये मार देते तो मस्त क्लच होता। क्या इनविजिबल भाई? मिस कर गया। हट सही हो, कोई बात नहीं। अरे लेट जाते ना उधर, लेटने में नहीं बनता है। लेट जाते तो मजा आ जाता। अरे इधर ड्रॉप शॉट देते तो। ड्रॉप शॉट गया ही नहीं बोल के। ड्रॉप शॉट को सीखना पड़ेगा। निब्बी से टिप्स एंड ट्रिक्स लेना पड़ेगा। निब्बी उस दिन कर रही थी ड्रॉप्स। अरे क्योंकि तुम्हारा बटन दूसरा है ना, स्लाइड का और जंप का। हाँ इसलिए way your gun moves. No, I've got this idea of like, Yondu from Ghost. He's got a big fin on his head. Yes, but make that a blade. Absolutely. Isaac. Oh, quick swat again. That is his side on. That's क्या हुआ? रेडी करिए। हेलो आवाज आ रहा है? एक बात नोटिस किया, जब भी हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं ना, तब पहला गेम अच्छा जाता है और उसके बाद फिर हम लोग को क्या हो जाता है, मरते सट।
ये कौन बोल रहा है? अरे नहीं भी हम स्ट्रीम में वैसे तो नहीं करती तो आज 10 बजे से अरे एक नया मॉडर्न वॉरफेयर गेम लॉन्च हो रहा था, उसी का स्ट्रीम कर रहे थे वॉच पार्टी। तो उसमें एक ये फंक्शन था ना कि ये प्रिजन मोड था उसका। हम बोले ना कि ये तो प्रिजन मोड है, अपने एक टीममेट को प्रिजन बना देगा वो, तब उसको फिर छुड़ाना रहेगा। हम बोले कि जैसे कि तो समझा रहे थे कि जैसे कि हम लोग सब खेलेंगे इंडिविजुअल भाई, तो आपको प्रिजन बना देंगे तो वो फिर हम लोग को बचाने जाना होगा। तो सब लोग चैट में बोलने लगा ना कि निब्बी को प्रिजन बना देना, निब्बी वैसे भी मर जाती है निब्बी वो पी क्या इंडिविजुअल भाई केजे निब्बी वो पी कौन है वो हरामी? स्क्वाड तो गेस करना, गेस कर कौन है हरामी बोल के गेस कर तुम। अभी नहीं सबीर तो आया भी नहीं बेचारा। रात में जरा स्नाइपर मिला है कुछ नहीं। गांड इसका लाल कर दिया। ये क्या दर 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 कर रहा था? ये श्रीलंका का है क्या? तीक्ष्ण मार दिया इसको। वही है श्रीलंका का लगता है। किसका है? श्रीलंका का। क्या श्रीलंका का? वो बंदा जो मर गया था। अच्छा अरे यार ऊपर है यार लोग दोनों कैंप कर रहे हैं घर पे। एक घर के ऊपर है, एक घर के अंदर है। देख लिए। एक कोने में ऊपर सेकंड फ्लोर में, एक कोने में। ऊपर है अब्दुल भाई, ट्रैप डाला है। मरना नहीं कोई। वो ट्रैप फोड़ दे पहले। ऊपर ही है। कोई निंजा नहीं है ना हमारे में। दरवाजा के पकड़ के जाना हम फेंक देंगे तो। लेकिन देख ले वो उधर ही उधर और रेडी रुका है। उसको पिस्तौल में मारेगा, मैं रुका आएगा। अरे वो रे नो 14 मेंबर है। अरे मुझे नहीं आ सकता हूँ घर। घर के ऊपर ही अभी तक भी घर के ऊपर। हम लोग क्या इंग्लिश में बोल रहे, हिंदी में बोल रहे थे घर के ऊपर है बोल के। तो वो लोग जाके ढूंढ रहे थे ना, मिला नहीं क्या? ढूंढ रहे नहीं थे, वो ऊपर जा रहे। अरे यार एमो खत्म यार, हट। अरे उधर गया, उधर भी एनिमी है। देखो देखो ये कौन है? 3 नंबर के पास स्नाइपर। कहाँ मरे? अरे वेटलैंड में चॉपर लेने गया था, पूरा स्क्वाड था। भाग के जा रहा है। अब्दुल भाई निकलो इधर से, आ जाओ। अब्दुल भाई बाहर निकलो, हम जैकल से जाएंगे। चॉपर ले लो ना, लाने उनको जैकल से जाएंगे। अब्दुल ये राइट साइड में गया है तो। अरे चॉपर है ना ऊपर, वो किसका है? वो हमारा है, मैं लेके रखी थी उधर। जो जैकल से जाते तो हमला करते जाते ना।
घर के अंदर बोलता वो वेटलैंड में। अच्छा घर के अंदर पड़े हैं। तब तक तो चॉपर तुम ले लो, मैं इससे जाता हूँ। पहले गन हाथ में ये, तुम ये ले लो और उधर से पहले हमला करो फिर हम उतरेंगे। क्रॉस करो एक बार बमबारी करते हुए। लगता निकल गया। नहीं है उधर ही है। बमबारी करो। जाकर छोड़ दिया। मैं ना बाहर निकल रहा हूँ। मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ। निकल जाओ अब्दुल भाई, बस छोड़ दो, अब वो बिजी हो गया। इसमें आ रहा है स्केटबोर्ड में, जाके ठोक दो। हाँ मिल गया। अरे नाइस। मारो। गाड़ी लेके निकल जाओ। गाड़ी पीछे निकलो गाड़ी निकलो। अरे गाड़ी फूट गई। अरे गाड़ी तो पूरा फट गई। यही लेके देखो उड़ता है। वही जाकर लेके जाओ। उड़ता है। हाँ पकड़ लो चले। कहाँ जाए, इधर तो बंदे आ रहे हैं। चले गया किला चलते वही एक प्लेस तो है। किला उसका उतर गया। दानिश खान, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। कैसे हो भाई, बहुत दिनों बाद। और चलाओ घटिया शॉटगन। अरे नहीं, मेरे को लगा ना दूर तक काफी, मेरे को लगा उतना में हो जाएगा उसका, पर वो साला काफी दूर था उसके रेंज से। अभी उसको ना नर्व कर दिया, इसलिए पहले सही चलता था। आज टाइम मिला। चलते हैं इधर से। मिल गया ना इनविजिबल सब कुछ? मिला, डीआरएच मिल गया, बहुत है। मेरे को तो AK-47 मिल गया। चलो उसमें तो काम चला सकते। हाँ ना, एमओ भी बहुत सारा मिल गया, 260। मेरे पास 160।
अब्दुल भाई कहाँ घूम रहे हो? जाकल ले भी वही जाकल पकड़ के घूम एक ऐसा ही ना मिला था रैंडम पूरा मैच जैकल लेके रह गया था घूम। आवाज से इरिटेटिंग होता है पूरा वो जब बैठे रहते हैं अंदर पे, बहुत तेज आवाज करता है। साला कौन है ये? अरे रे 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 रे, बैठे रहना बैठे रहना। तो वही है, तुम्हें अभी इसको मारा था ना तो अब्दुल भाई ने, ये बंदा आ गए। ड्रॉप बस स्टेशन चलेंगे हम लोग, सब आ जाओ बस स्टेशन। वो साइड में मत जा, घूम के जा। हाँ इधर ही से जाएंगे ना। इसका हालत खराब है। वो लेना है क्या गाड़ी? ले लेते हैं। नहीं चेंज करते हैं। उधर बंदे हैं, लड़ना तो पड़ेगा हम लोग को। देख 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 पूरा स्क्वाड है मत जा। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, दो स्क्वाड है। निब्बी ने मार दिया ये को, निब्बी ने मार दिया। जा जा बैकअप दे। इधर से पीछे से या फिर ऊपर चलेंगे? इधर अरे इधर से कहाँ गया है? उधर और दो है। रिवाइव दे रहा है उधर को, तुमने जिसने वो मारा था। अरे शॉटगन का नाम मर गया क्या? शॉटगन साला हथियार है, पता है। अब्दुल भाई उधर एक बाइक देखा था मैंने ऊपर। वो नहीं इधर ऊपर इधर ही। वो मत ले लो, पूरा डैमेज है। अरे सब लोग हो गए क्या? मेरा बचा हुआ सेट। Pistol in range on that. These different interactive systems, we're just hoping that fans find new and crazy ways to play the game. I don't know. What about you? You just want it to be fun. I mean, at the end of the day, right? Yeah. Because nostalgia, you gotta probably tune some of it out. Like some stuff, that's tough. You don't know what's going to become nostalgic, right? You don't know, and I think. हाँ open में, पूरा open. इधर नहीं, नीचे। जाओ सीधा जाओ। अभी स्कैन करो। अरे यार ऐसे बैठ के स्कैन मत करो यार। जल्दी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? उधर एयर ड्रॉप में जाएंगे। अरे वो तो एयर ड्रॉप ले लिया। नंबर 3 जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे जाएंगे एयर ड्रॉप। मैंने उधर ले लिया ऑलरेडी। मैं तो जिधर मारा उधर ही जा रहा हूँ। जिधर मारे उधर बंदे हैं काफी। निकल गए उधर। एक आ गया। देखो जल्दी निकलते इधर से। आ रहा है। अरे ये मेरे पीछे पूरा का पूरा टीम कहाँ से आ गया ये? तो हम तुमने मारा ना एक को। हाँ ना, तो ये पूरा का पूरा मेरे पीछे भी आ गया।
एक तो ये सब पूरा शॉटगन लेके धक्का मारले चलता है। स्कैन कर। अरे भाई जल्दी जाओ। कोई ना, इसके बाद पूरा चलाएंगे ये शॉटगन, स्टार्टिंग से शॉटगन चलाएंगे। सुस्ता के लूटती किल भी नहीं मिला है। ये कमारा वो one of our strengths is now people are downscaling offices, so I was kind of curious if you just had like a lot of, I don't know, superstars kind of show up and pump out some really amazing stuff. Yeah, it's tricky because, you know, we've just now been coming back in and getting kind of that kind of community in the office, and that has been airdrop has been delivered. अभी सब उधर नौटंकी कर रहा है। कौन लॉन्च इवेंट में खेल रहा सब। Classic Warzone features 120 live player with Oscar returns, global release next year. वो तो कूद रहेगी क्लॉथ में। नेक्स्ट ईयर आएगा ये Call of Duty Warzone। वेल में? हाँ। स्लॉट है। अरे अभी तो नहीं है, अभी तो भाड़ा हुआ है। प्लैंक में जब होता तो बताते। भाई तुम्हारी स्ट्रीम कोड वॉरजोन वालों के साथ ओवरलैप कर रही है बार-बार। अरे नहीं प्लैंक भाई, मैं ही चेक कर रहा हूँ वो बार-बार। उधर वो YouTube पे चला जाता हूँ मैं। निब्बी तुम ज्यादा टर्न मत लो निब्बी, वो पीछे पूछ बन जाता है। सीधा भागो ऊपर। सीधा भागो ना तुम। अरे उधर और एक नॉक हो गया यार। अभी देखो स्नाइपर ली हुई तो मारो पीछे। देख अरे वॉर मशीन ले रहे। वॉर मशीन तुम्हारा पाव का नीचे मार मत, हील कर दूर फेंक दे, एनिमी को मुंह पे मार। तुम्हारा पाव के मारेगा तो तुम ही डैमेज मिलोगे। भाई कहाँ लेटी है? दो टीम अनाउंस किया क्या? नहीं है लगता। 3 टीम है। आ गया है, किधर ही आगे, रुकना। अरे तू रुक। वो तो नहीं मरा। ये मर गई। किल ही नहीं मिल रहा है क्या? पनौती लग गया पता नहीं। कैरेक्टर चेंज करना होगा। निब्बी ने मंत्र मारा कि हम लोग को बहुत दिन तक परेशान किया ये लोग। अरे आज निब्बी का खुशी नहीं देखते इनविजुअल भाई शाम को। क्यों? बाप रे बाप। शाम को क्या हुआ कि स्ट्रॉम भी आ गई थी, आप नहीं थे
स्ट्रॉम आ गई थी और मिंथिया थी और ये थी और झूठा है, मिंथिया थी और झूठा। हम क्या तो हुआ, डालने चाह वो रहे थे 3 स्टोरी पे। लड़के के साथ खेल रहा था, तो इसलिए मैं उसको बोली अब अरे आई न देखो तो पूरा अजीत कल खुश है, अपने 3 अरे अरे लड़कियों आज के सिर्फ साथ लड़की खेल रहा है। है बोल के। हम बोले और भाई उसने क्या खुशी बोला, देखो इसका। हाँ जी देखो इतना खुशी, मुझे भाई नहीं है बोल। तो एक मैच में हेलो हेलो और क्या तुम क्या है इसको एक्सेलियथ को बकलो ये गे बोल के समझे। हाँ लड़के के साथ बैठने और क्या बोलती है, एक उधर मैच लड़की उधर में ऐसा हुआ ना कि ये तीनों एक एक किल की, ये निब्बी और मिंथिया और वो स्ट्रॉम, और मेरा 0 किल था तो सब लोग मर गए थे। तो गेम जैसे ही आया ना वो किल देखा तो बोलते हैं ना अरे देखो देखो हम तीनों लड़कियां एक एक किल की हैं। हम बोले कि भाई तो इसमें दिखाने वाला क्या बात है, देख रहे तो मेरा 0 है। हम बोले कि अच्छा। आज तो सच में पानोती लग गया, देखो 2 मैच में एक में 1 किल एक में 0 किल। असली मुद्दा यह था कि मेरा 0 किल दिखाना था। तुमको इनडायरेक्ट बोल रहे थे तुम्हारा 0 है बोल। हाँ आज पूरा खुश थी, 3 लड़की खेल रही थी तो हम तीनों को वादा किए हैं, ये तीनों को टूर्नामेंट में उतारेंगे। एक और लड़की खोजना है। अरे इनविजिबल भाई चली गई, तीनों टूर्नामेंट खेलने चली गई तो हम लोग को तो वैसे मारा। इन लोगों को पाव रखते ही कदम रखते ही मार देंगे। हवा में मार देंगे जब आते उतरते ही। नहीं तो ऐसा कि ये लोग होल्ड कर सकती है, जाके कहीं घास पे तीनों लेट जाएगी बस लाइन से। लाइट बत्ती बन के कहाँ घूम रहे हैं। बस हार्बर जाएंगे उधर ही विध्वंस फैलाएंगे। ब्लैक मार्केट जा रहा है। पार्कर इस सब बेचारा को अथी मनो नहीं लग रहा होगा तो इसी खोल के बैठल होगा इवेंट। सब पैसा लिया ना कॉड मोबाइल से। किसने पैसा लिया है? पार्कर ये सब। तब तो वो सब पैसा लिया है? पार्कर ये सब को पैसा मिला होगा नहीं? पैसा नहीं मिला लगता है उसको, तो कल इनविटेशन दिया था ना ये लोगों। अगर जाते हैं तो मिलता था। इनविटेशन है तो वही तो इनविटेशन है तो दिया होगा ना कुछ। ये क्योंकि उसके वीडियो में देख रहे हैं पेड प्रमोशन लिखा हुआ है। हाँ फिर तो दिया है, मैं देखा नहीं। जो भी ये सब कर रहा है ना और क्वाड के साथ पार्टनरशिप, उसके वीडियो में पेड प्रमोशन लिखा हुआ है। सबको पैसा नार्को को कोई भेजा नहीं लगता है। नहीं कर रहा वो। अरे उसका तो रिलेशन अच्छा नहीं है ना इसका फॉरेन के साथ, बहुत गाली देता है ना वो। उसका तो पसंद ही नहीं आता है मुझे। प्लेयर है दुनिया में। गॉड नार्को सही में उसको देखे नहीं है वो स्ट्रीम करते। अरे वो ये है ना जो उसके साथ खेलते हैं ना उन लोगों को कितना गाली देता है मालूम है वो। मैं तो बोलता था यार माँ का भोसड़ा है बोल के जा मादर चो तू ये प्लेयर है क्या बोल के जाता था। लोगों को शर्म भी नहीं, उधर ही फिर भी मुंह लटका के बैठते दान दिखा के खेलने। अच्छा वो अपने टीममेट्स को देता था। हाँ अरे खुद मर जाता है, बाकी जब मरने के बाद ये वो लोग मारेंगे ना तो
बोलता है ऐसा खेलना है तो मेरे साथ खेलने का नहीं, वो है तुम क्या खेल रहा है लौड़ा वसन, ऐसा बोलते रहता है। ये भी तुम ठीक हो ना, तुम कुछ उल्टा पुल्टा नहीं ना सोच रही हो कि यही अत्याचार तो मेरे साथ भी होता है। नहीं, हम लोग तो इसे मारेगा तो गाली नहीं देता, मैं काल इसको गाली देता हूँ जब ये गाड़ी चलाती है। इसीलिए तो निब्बी को बोल रहे हैं क्या उसमें हम लोग में फर्क है। निब्बी कुछ बोल नहीं रही है, ये दिमाग नहीं चलाती है ना, दिमाग में गुस्सा भरा है। हाँ निब्बी, ये स्विच प्लेट गोल्ड एंड एक्सटेंडेड मैग लगाने के बाद 56 आता है। खराब है स्विच प्लेट। किनेटिक ले लो, चलते हैं। निब्बी है क्या गाड़ी? इसको तो अलग ही है। अरे हाँ ना, सब पूछने के बाद तुझे क्या मिलता है? इधर जाएगा। ले किनेटिक। कस्टम अभी नहीं गिरा, आ रहा कस्टम आ रहा। निब्बी चला रही है चौक। इसका गैंग में यही चलाती है गाड़ी पूरा, मालूम यही कौन? हाँ तो जिस जोलो के साथ ये खिला, ये सब तो इससे गले गुजरे। किसको मार रहे हो जी? जैकल ट्रेजरेंट का ये लीडर है ये। हाँ निब्बी तो लगातार मारते जा रही है। आईजीएल ट्रेजर हंट का। इसको बैकअप चाहिए। आज शॉटगन चलाएंगे, लॉन्ग बैरल ये सब मिलेगा तो दीजिएगा। तो गोल्डन और वो दोनों तो स्लाइड ही नहीं करते तो लॉन्ग बैरल नहीं हम करेंगे। वो चॉपर को मोड़ दो अब्दुल भाई, वो चॉपर आ रहा है, छोड़ दिया उधर ना इधर। कौन सा टूर्नामेंट है उतार लो। चलते हैं बैठने भी। मुझे देना में चला
बाद में शॉट में चला अरे भाई माफ करना भाई कौन सा मौका नशा करके क्या चलाओगे निप्पी एक बार फिर से बोलना थोड़ा इसको मैं टम्बलर देगा लेगा इधर एक्सटेंडेड है इधर निप्पी शॉटगन चाहिए ये लो मेरा वाला लेगी ये शॉटगन बाप रे बाप निप्पी उतर गया रे बैठो लेने के लिए रेडी है ये किधर नीचे कूद है क्या इस पे निप्पी तू उड़ा अभी तो किल चाहिए तो किल चाहिए किल बंदा इधर भी ऊपर है क्या डाउन है वो तुम्हारा आई एम गोना टॉक्सिक मेरा मुंह भी लग गया आज हम ऐसे गाते रहते हम गोना टॉक्सिक एक्सा वर्जन आ रहे अरे दो है यार ये बहुत वीक होता है ये बहुत वीक है इसको मार दे आराम से पूरा वीक है वो और लेकिन भी रिवाइव दे जल्दी डालता नहीं मार दिया रुको अब्दुल भाई डॉग टैग लो अरे पीछे भी आ गया अरे इधर आ गया वही शॉटगन वाला है निब्बी इधर आना अरे यार ये बहनचोद शॉटगन 14 साल मादक से तो एक शॉट में खत्म करते हैं इनको लोग मत आना निब्बी बहनचोद रखा है गाड़ी ले ले तुम गाड़ी तीनों एक ही साथ है मत आना भी उधर जिधर पहले हम लोग मारे थे ना चॉपर निकाल के उधर एक बंदा उधर गाड़ी उधर गाड़ी लेने को बोला था इधर फिर गाड़ मारने के लिए इधर साला एक असॉल्ट एक शॉटगन लेके अरे इन लोगों का नजदीक जाने का ही नहीं दूध से ही मारने का निबिनो कौन सा नशा कर रही है रो रो के मुलाकात नसीली हंसी किए हंसकाते हसीली या तू भी कर ले नशा
leader. Good luck. Yeah, if I use BY15, I cannot connect my bullet image, and if someone else use, they will one shot. I know, brother, I can understand. किधर जाना? उधर जाने का है। मारा अगर नहीं होगा तो निकल जाना, इधर मरना नहीं है बस, क्योंकि बहुत ज्यादा टीम आ गया है। भाग गया तो वो गन हम लेना था। बाप रे बाप, तो जो दबाया है ना, हमको अभी तक गन नहीं मिला। मेरे पास भी वो अब्दुल भाई था। अरे भाई इतना ऊपर कूद गया है यार। अरे यार, जब तक रिवाइंड करते तब तक साला स्टार्टिंग में गन ही नहीं मिला है बेंच। वही हो गया खेल। हम लोग मैच वहीं हारे। You were the jump leader. Good luck. A great way of kind of moats that you could do, like a hula hoop or something that would go out to third person, and I kind of missed that going forward because I'd like to see, if I get this really cool operator, I want to see it more. But like to your point,
seeing the character animations and stuff, like they just look godlike. Like it does look so good. Looks so good. And not to mention the sneak peeks that we've got from like the vault and from what operators are going to be coming off of beta. Like they look incredible. Like they look so. वो सब ये मॉडर्न वॉरफेयर खेल रहा है 3rd पर्सन में भी और पूरा कर रहा है। हाँ टीटी बोल रहा है वो लुक सो गुड ऐसे कर रहा है टीपीपी में। हाँ मॉडर्न वॉरफेयर खेल रहा है मल्टीप्लेयर। बार कर बोल रहा था टीपीपी है लेकिन वो बोला तो मल्टीप्लेयर ध्यान नहीं दिया। See Bobby plays when he's playing Warzone mobile. Oh really? Bobby plays. हम भी बॉबी प्लेस का भी देख रहे हैं। बॉबी प्लेस का लिख रहा है स्ट्रीम स्पॉन्सर्ड बाय कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वॉरजोन मोबाइल कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल सबको मोटा पैसा दिया। वो भी बोलने का था ना मुझे भी दे दो मुझे करेंगे बोल के 4 को देखता बोल के मेरे पास स्पेशल 4 व्यूअर है हमको भी दे दो। वो रोज आते हैं स्ट्रीम पे। स्टार्टिंग से स्ट्रीम करते ना अरे बंदा है इधर। हाँ इन्विजिबल है हील नहीं है बंदा एक ये क्यों आ गया? सबसे ऊपर जा रहा साला हरामी। नाइस अब्दुल भाई भागो इधर से। वो गया और एक पोर्टर गई। अला ये उड़ा तो मार रहा है पूरा नीचे में गया पानी में गया ना। नाइस देखो बॉट के पास कितना लूट है। और ये भाई ये वॉर्स कैरेक्टर कितना मस्त दे रहा है ये वो घोस्ट वाला। अरे वो बाद में कॉल ऑफ ड्यूटी में आएगा उधर से। अभी पता है पीस ये लैपटॉप लेके ना ये खेलेंगे वॉरजोन खेलना है ट्राई करना है सीधा पीसी वाला। तो पीसी वाला तो हम तो दिन रात खेलते थे वो छोड़ थक गए खेल के।
इसमें सिर्फ बैटल रॉयल है, दिख तो रहा है बैटल रॉयल प्ले। Releases next year. तो अभी नेक्स्ट ईयर तक कॉड मोबाइल ही चलेगा। वो अगले साल दे रहे हैं। गुड नाइट राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रीम पे आने के लिए। हाँ अगले साल दे रहे। तब तक बोल भी नहीं सकता है, टीपीपी देगा तो भी दे सकते। हाँ ज़्यादा हाइप हुआ तो टीटीपी दे देगा, कोई ठीक नहीं है। सीधे किल हाउस चलते हैं ना, द ड्रॉप है। ले लो। निब्बी कहाँ गई है? मेरे को एक नॉर्मल ही ले तो दे दो, एक ब्लू ब्लैक। हाँ एक ब्लू है ये, चलते हैं। अरे ये अटक गया क्या? उठ नहीं रहा। सामने 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 एक और आ गई है। निब्बी कहाँ है? निब्बी तो रिवाइवल फ्लाइट में है ना। उतना दूर है। शॉटगन ले लूं या AK-47 रखूं? शॉटगन कर पाते है तो ले लो। ट्राई मार। आ रहा है। कूद गया। दो पूरा टीम कूदा। अरे यार किसी की बात क्या है ये नशवा मादिनो बहनचोद ये कितना आ रहा है भुसड़ी के? दूसरा स्क्वाड आ गया। माधर चोद साला पूरा नहीं वही स्क्वाड है, वो पूरा रिवाइव दे रहा है। देखो निब्बी को लेके बिगिन उन मा हिल कोना एक साथ तुम नीचे जा नीचे रोड पे जा।
पीछे आ रहा है आराम से ले मादर चोद भुसड़ी के इसको गाड़ी चला sama badara na tun gam puste पहचो ये लोग को इतना मारे भी घूम घूम के एक तो ये वाला साला भाई एक ही बचा आपने तो पूरा कैरेन तोड़ दिया। अरे मैंने इतना गांड उछला के मारा इतना मेहनत से कभी नहीं देखते तो कनेक्ट नहीं हो रहा था शॉट वही लग रहा होगा नीचे सीधा जा उसका कनेक्ट नहीं हो रहा था उसका पहले वाला का बहुत टाइम ले लिया उसको मारने राइट ऊपर अरे ओए जा दूर में जा दुनिया का बाहर बस ये तो चॉपर चला रही है क्या ये अरे क्यों पारे गुजू राम तो शॉट ऑफ वो अभी तक बोल रहा अभी आगे मत जा नोटन के मत दिखा इधर पत्थर के पीछे छुप जा और चैट पे जाके कुछ बोल रहा था पता नहीं हाँ वो ऑल चैट पे बोल रहा है कुछ सुना ही नहीं बोल रहा था अरे वो पर्शियन ईरानी है वो इधर औरत भी होगी साथ में वो भी कुछ बोल रही थी अरबी नहीं हो पर्सी एक औरत भी थी ना एक लड़की की आवाज भी थी लड़की का हम नहीं सुने आवाज लड़की थी तो हम लड़की तो अभी लॉबी में ही बात कर रही थी मैं अभी बोल रहा हूँ लड़की है लॉबी बात कर रहा है निब्बी को देखो पेड़ में तीर गोपी अरे उसको पत्ता लेके गांड में डाल दे गन कौन सी रखी पीपीएस M4 कस्टम पे आके मर जाएगी ना तुम इतना सुनोगी ना पूछो मत नॉटन के दिखा के ये लैंड किधर होना है यार हर जगह तो एनिमीज ये बॉबी अभी खेल रहा है ग्राफिक्स कैसा है कॉल ऑफ ड्यूटी ये वॉरजोन का अजीब है ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है हां ग्राफिक्स हम चेंज कर सकते हैं ज्यादा डार्क है लगता है ग्राफिक्स तो हम रियलिस्टिक ग्राफिक या डायनामिक कर सकते हैं खुद ही तो अच्छा एकदम उसके तरह जैसे रियल वॉर जैसे कैसे चलता है वो ऐसा बिल्कुल चल रहा है किधर जाएंगे उधर ही जाना है क्या उधर ही चलो उधर तो नहीं आ रहा ना अरे तो उधर ही चलो ये 1 मिनट है अरे ये लो ये से शॉट आई शॉट मार रहा था अच्छा वो मेरा टॉप है जो वो वाला मेरा टॉप है बीच में मेरा स्नाइपर उसने ले लिया अरे ये के ले लिया है कहीं जल्दी निकलो उधर से चलो जाएंगे अरे सीधे बस लाइट है अरे देख लिया हरामियन आ गया हाँ कहाँ है एक को तो मारे हम स्नाइपर है वो शार्प स्नाइपर है कर रहा है अंदर एक ड्रॉप है इसके पास M4 है
आ रहे अरे एक साइड ना अरे वो लोग देख रहे हैं ऊपर नहीं हम लोग के पीछे भी है वो भाग रहा ऊपर तीन बंदे मेरे पास उस तरफ से उधर बंदे हैं आ गया इधर ही आ रहा है लैंड करने से सामान नहीं नंबर 3 भाई मुश्किल नहीं आप ले लो ले छोड़ दिया उधर आके ले लो मैं पता नहीं था आपका चलते हैं ना मेरे साथ 2 बंदे लैंड हो रहे हैं 2 बंदे मेरे साथ हैं जोन डैमेज देगा बहुत जंप के काटे हुए हैं और कुछ है अच्छा उधर जाओ यार तुम्हारा ड्रॉप पे तुम जिधर मारे थे उधर जाओ क्या चाहिए जाओ पहले सेफ जोन के अंदर बाद में ले लेंगे नहीं मिल गया सामान मुझे अच्छा सामान उधर लड़ रहा है सब नेक्स्ट ईयर आ रहा है ना Warzone हाँ नेक्स्ट ईयर आ रहा अभी नहीं आ रहा बहुत दूर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना वही फरवरी मार्च तक करेगा अभी नहीं करेगा आगे थी ना मैं देखा था तब तक में भी हम गॉड से ये हो जाए क्या बोल रहा है उल्टा जा रहा है ये क्या हुआ नीचे गलती से उल्टा जा रहा है ये अरे वो मरने के बाद भी कैसे उठ के चल अरे हम भी वही देख रहे हैं मरने के बाद वो कैसे चढ़ने लगा देखिए कैंपर से चलो यार वरना वो इधर हमारा मारना शुरू कर देंगे हमको नजदीक जाना नहीं है लोगों का ये वही टीम है उधर हम लोग और ऊपर चलते हैं ना थोड़ा अरे नॉक हो गया ग्रेनेड अरे उधर नेड पे वो यार Let's go. कल तो वो ये आ रहा है ना एल्केट्राज भी कल एल्केट्राज भी आएगा
अभी 2 दिन अल्कट्रास। अरे निब्बी तुम्हारा सही है उधर खेल रहा है, तुम नहीं जा रहे हो। निब्बी नहीं खेलती। अरे निब्बी ने बचा लिया गेम हमारा। एंटेलोप पकड़ के निब्बी पूरा वो एंटेलोप हवा में उड़ रहा। क्या कहते हैं, गेम लैग भी हो रहा था ना। हम अगर लैग होता है बहुत गंदा लगता है, गेम करना बहुत मुश्किल। भी पापा के पारी बन गई थी। स्ट्रीम बंद कर दिया पार्कर। नहीं वो ज्यादा सोशलाइज नहीं होता है, वो छोटा है ना। अच्छा मैं तो बॉबी प्लेस को देख रहा हूँ यार, मतलब हाँ वो भी बॉबी प्लेस खेल रहा, वो देख रहे। थोड़ी अजीब सी है, मतलब वो जो कभी काउंटर स्ट्राइक खेला है। हाँ उसी की तरह लग रहा। अगर ये थोड़ी सी रियलिस्टिक बना दें, स्नाइपर मैंने जैसा दिख रहा है लगता है। स्नाइपर ये तो एसएमजी टाइप लग रहा है। ये वही है ना जो इसका 831 के सब्सक्राइबर है और 900 का व्यूज आ रहा है वॉचिंग। किसका? बॉबी का। लेकिन स्ट्रीम देखने में मजा आता है। पार्कर तो भाई उसको डोनेशन भी मिलता, आज देख रहे थे हम भी। अरे बहुत देता है, बहुत मिलता है उसको। मैं तुमको परसों बोला था ना, भर के डोनेशन $50, $20, $15। क्योंकि बात अच्छा करता है यार, खेलते टाइम में चैट पे पड़ता है। इधर चलेंगे ना ब्लैक मार्केट। किधर डॉग जाना है? रीड ही नहीं करते, गेम में लगे थे सीरीज। पहुंच गए इधर। हाँ बॉबी प्लेस सही है। तुम पापा का भाई है, हम भी उठते। और कोई नहीं आया क्या? इतना दूर फोन है। आ रहा होगा निब्बी शॉटगन लो, तुम्हारा इधर है। अरे निब्बी शॉटगन ले। निब्बी ऑन फायर। कल थंबनेल में आएगा निब्बी ऑन फायर शॉटगन। निब्बी प्लेस शॉटगन। निब्बी और मोना को डुओ में चैंपियनशिप खिलवाएंगे। निब्बी, मोना, स्ट्रोम और मिंतिया। एकदम से यार एमएस हाई हो गया 60। निब्बी बोले कि हम लीडर, हमको ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं बोले कि मैं रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी है। अरे निब्बी शॉटगन है इधर। अरे शॉटगन में मारना शॉटगन में मार निब्बी करके एक शॉट। निब्बी बोलेगी मेरे इसका सबसे पुराने खिलाड़ी हूँ, मैं चलाऊंगा टीम, मैं लीड करूंगा। वही I'm the IGN। पार्कर बोलता है ना पुश पुश। पार्कर बोलता है पुश पुश। वैसा ही निब्बी करेगी, चढ़ 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 चढ़। निब्बी बोली के स्ट्रॉन्ग पुश पुश।
क्या बोलोगे निब्बी? निब्बी बोली कि पुश पुश पूरा खुश स्ट्रोम को। स्ट्रोम बोले कि यार यार उधर जाएगा तो हमारा ही वाट लग जाएगा बोल के। तो बोले कि लौड़े लगाने के चक्कर में है ये। तभी निब्बी बोले कि नहीं तुम पुश करो, मर जाएगा तो मैं टैग उठाऊंगा। अरे हाँ निब्बी क्या करते हैं, निब्बी बचती क्यों है भाई? ये जानते हो ना कि ये फाइट के बीच में हम लोग सब नॉक हो जाते हैं, तो ये कैसे बच जाती है? क्योंकि ये फाइट में होती ही नहीं है। हम लोग जब फाइट करते रहते हैं ना सीधे ही निकल जाती है काफी दूर, अगर वहां रहती भी है तो। मरो बोल के मरो में टैग उठाऊंगा। और शिट जेट आ रहे हैं मेरी तरफ। नीचे जा। एक सेकंड। जेट का खौफ देख रहे हो? लेकिन हम लोग तो उसको गिनती में ही नहीं लेते। देख कि जेट है, ये जेट मारेगा। आप लोग आ जाओ जल्दी से। आ जा इधर। चलो वापस आएगा, मैं इधर ही हूं। चलो सब उधर है। उधर चलो ना। अच्छा जाने दो, क्रॉस करने दो। चलो जल्दी। पहले वो ले लेते हैं। अरे कुछ नहीं है रे उधर। आ रहे तो फिर इधर क्यों रुके? कोना में डालो। तो नीचे उड़ाने के ताक में है। हमको लगता है ये उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं है। चलो इतना देर में तो कितना चौपर उड़ जाता। अच्छा वो बिगिनर है, फर्स्ट स्टेज पे है। फर्स्ट स्टेज पे तुम्हारे जैसे थर्ड स्टेज पे नहीं है अब्दुल भाई। देख रहे हैं इतना देर में कितना चौपर उड़ जाता है। पीछे हमारे पीछे। छुआ छुई खेल रहा बोला। दो हिट मार दिए। ये 2 हिट और चॉपर गया। फिर आ रहे जेट हमारे पीछे। शिट अपना जौहर दिखाने जा रहा है। सब चॉपर उड़ा था। हम लोग ड्रॉप लेना है। सब चॉपर उड़ा। ये पहला गया, एक गया। रडार में चलते हैं। अरे इसको मारो देखो। लगता नहीं होगा दोस्त। अरे उड़ा दिया रे। इधर का है कूद गया। वो उसका ये कंट्रोल मिस हो गया रे। वो सीधा क्रैश हो गया इधर। तुम्हारा पाँव का नीचे मेरे पाँव पे गिर गया ना, तो मस्तक हो गया। सॉरी बोला तुमको। बंदे में आप लोग की तरफ लेके आ रहा हूँ। बैठना इधर है आराम से। अभी चक मारने जा रहे हैं। शॉट का ले ली। ले लो हम इधर ही ले लो ड्रॉप ले। अरे कौन आगे चलो। अरे मुझे मार रहा है वो। मारने दो। कूदो। ऊपर ये वो पुश करेंगे ना। पुश नहीं भी शॉटगन पुश। नहीं काफी दूर चला गया। इधर आ गया।
एक शॉट दिए, एक शॉट दिए। अरे इधर और भी बंदे हैं। अरे भाई इतना कितना गाड़ी इधर है। पीछे अरे पीछे बंद पीछे तुम्हारा पीछे वो पेड़ का पीछे टूटा हुआ पेड़ है ना ऊपर है निबी तुम्हारे पास है। क्या कर रही है तू? वन शॉट शॉटगन के वन शॉट है वो आदमी। सब पता चलो आदमी है लगता है बोल औरत भी होएगा। पूरा शॉट तुमको ही दिया। इसका एगो लगता है ये रिवाइंड मार दिया। इसका एगो दोस्त रिवाइंड मार दिया। ऊपर है फिर से वो रिवाइंड मारा। टैंक के पीछे वो फिरा रहा है नेट फेंक रहा है। आप उधर से देखिए, हम पीछे से देख रहे हैं। आ रहा अरे रिवाइंड मार दिया हम ऊपर जा रहे हैं। पत्थर के पीछे इधर ही है। पत्थर के पीछे ऊपर आ रहा है पीछे। एक तो तुम्हारा सामने रिफ्लेक्ट उधर। मारना मर गया। हम बहनचोद गुचका में गिर गए थे उधर। हेलो डार्क ओपीएस, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। कैसे हो भाई? मेरा रिवाइंड रिवाइव बस रीलोड पकड़ा था। इतनी रात गए सोए नहीं हो क्या है? अरे हील है क्या किसी के पास? कुछ भी नहीं। हाँ है ना मेरे पास। हाँ मेरे पास बहुत भर के इधर है मेरे पास ही। ब्लू प्लेट अटैक करता हूँ। अभी ड्रॉप है कस्टमर। अरे इसको ये प्लेट डालो वाले भाग गया था। अरे मैंने इधर पीछे डाला ना प्लेट उधर। मैं कस्टम ड्रॉप जा रहा हूँ। इधर मरूंगा मैं शायद। ये तो बोल के ही जा रहे हैं मारूंगा बोल। कहाँ है बंदा? उधर गाड़ी उधर खड़ी हुई है। बंदे इधर ही होंगे। हाँ दिखा पेड़ के पीछे। मतलब मुझे देख रहा था वो उधर गया, क्रॉस कर गया रोड उस साइड। उस तरफ गया। आ जाओ वो जोन में भाग रहा है। गाड़ी भी आई नहीं। मिल जाती तो भी शॉटगन से मार रही। गाड़ी शॉटगन से मार रही है। देखिए नंबर 4। इधर आना।
अरे निधि तुम उतना दूर क्या कर रही हो? फिर मरेगी ये लड़की। मत मारना इनको, थोड़ा टॉक्सिक। अरे अरे ये टॉक्सिक का चक्कर में खुद को फेल तो किधर से मारा? स्नाइपर बिना स्नाइपर पीछे 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 ऊपर भी है, इधर इधर। इधर देख, मैं इधर देख रहा हूँ कि तुम्हारा पीछे ये देख लो। बंदे नहीं, दो बंदे। एक शॉट लगा उसको मेरा भी डैमेज बहुत का है। इधर बंदे हैं, एक साथ इधर देख। अरे बहनचोद M21 गांड में डाल भोसड़ी के उधर पीछे। ये सब छुप के बैठा रहता है, इतना पीछे पीछे दादी ही गया उधर जो न मानो बाहर। जो हराम जोन कोलैप्स हो रहा है न्यूजीलैंड बाबू। ये देखो यही मारा, पकड़ो इसको। रिवाइंड किया यार, जब मरवाने तो मैं मर गया, सच मर गया। अरे तीन जोर में काम है। अपनी जगह पर बैठे। इधर भी बंदे हैं, इधर भी पानी में शॉटगन। अगर बच गए ना बहुत कम है, क्योंकि वो जो टीम है उनके पास और स्नाइपर सब है। उधर स्नाइपर है, देख लो। जाना तो उधर ही है। ईबीआर पकड़ के खेल रहा है। देख लिया है तुम सड़ी वाला सब। तुम पीछे जाना तुम। पीछे जोन नहीं ना, पीछे जोन तो खत्म ही होगा। जाना तो उधर ही है। अभी जाना, अभी के लिए जाना। हेलो फ्रेंड डोंट शूट लीजिए, आपका मन है कि 5 मिनट और जिंदा हम रहें तो लीजिए, रह जाते। नहीं, जब उधर ऑप्शन है तो क्यों जा रहे हो? हील कर तुम। देखिए कोई ऑप्शन नहीं है इधर। नहीं, तुम इधर रुक, गन ले ले, इधर रुक। नहीं अभी गाड़ी पकड़, ब्रिज पकड़ के जाओ उधर से। गाड़ी है क्या ढूंढ? गाड़ी ब्रिज नहीं ले सकता यार, वो सीधा मौत होगी अगर ब्रिज से गया। टैंक है ब्रिज पे। सब सुन लो, एक आदमी ब्रिज से आने वाला है। उधर बिजी है। उधर बिजी है, तुम पीछे से थर्ड पार्टी करते। अरे तुमको हील करने को बोला था, अभी तक हील भी नहीं की है। पता नहीं किनेटिक पकड़ के क्या कर रहे हो। एक बंदा पानी में गाइस। वो लोग आपस में लड़ते हैं। ये क्या कर रहा है? वाटर जाना सेफ जोन में। गॉड है 1v4 रुक, देख लिया। उसको बोलना डांस करना, इमोट दिखा। इमोट कहाँ से दिखा है? बाहर आके।
चलो यार मैं चलता हूँ. Okay. Bye bye. Good night. Thank you for the games. Bye. चलो see you. मिलते हैं कल. हम इसको बुलाएंगे कैरोलिना. कौन है लड़की? वो कल आई. Hello Caro. Lina. Hello, good night. Good night. Good night. Good morning. You were the jump leader. Good luck. Invisible भाई. Hello Invisible भाई. इतना लाल ही लगेले है. वो भी देख लिया. हिंदी में बोलने का, हिंदी में सब. शुद्ध हिंदी में. सुधु बुधु वे यू मैंने. निबी. देख रही हो लाली लगाए, तुम लोग लाली लगाए हुए नहीं करती. दो बच्चे की माँ है, देख लाली लगाए. अभी भी लग रही है कि है जवान है. Carolina, what is time there now? I think she's busy. थोड़ा अच्छा खेलना होगा. कोई लॉबी लगा तोड़ दो. KJ भाई चाहिए था यार. KJ भाई चाहिए. लाली लगा के. तीनों पर तीन एक ही घर में घुस रहे. तो लग रहा है कुछ खाने के लिए रखा है. I'm sorry, my mic couldn't connect. Was connecting. No problem. What time now, Carolina? There. And now is let me check. 9 and 4. 9:04. 9 and 4, yeah. No duty. Morning or night shift? No. I'm at home today. Holiday. Day free. Yeah. These my friends, huh? One is EXALIATH. One is Nibby. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. But she's a gangster. Careful, Nibby. Thanks. Yeah, I'm not lying, Carolina. We are not lying. He is gangster. She's a gangster. I'm not afraid of gangster. She has Or should I? She has an M4 and like AWM sniper. She owned. In real life. Well, someone is shotgun. I have a golden thing for shotgun. She's really good with the shotgun. Really? Yeah. So number 4 I have.
If you No, find, no shotgun, no. Oh, if you find, then give it her. It's here. She's better than broken. Shotgun. You know broken? Me? Yeah. You know broken? No. You know broken white. He's a YouTuber. He's God of shotgun. He's an axe. He teaches him like shotgun. Now she's better than him. That guy is YouTuber. She know Parker white one guy. Oh, you know Parker. She know Dante white. Yeah. Yes, I know Dante, of course, my friend. The only YouTuber I know, the only YouTuber I know is Dante. Don't lie, you know Parker also. Ah, Parker, who don't know Parker? And Narco. Narco is very bad. Always crying Narco. Yeah. चॉपर उठा लो सब लोग आ गए क्या किस टर्मिनल में मिलेंगे How is weather Carolina in Portuguese? Summer? Yes, end of summer. Kinetic इधर है चलो let's go अरे स्नाइप किया किधर है किधर मुझे दिखा नहीं रहा देखा है आइए रहा गाड़ी तुम थोड़ा टॉप पर चलाना ये नहीं करूँगा उसी पे कूदते हैं ना उसी पे कूदते हैं जब अरे वो दोनों को पेल दिया है इसलिए आ गया रहा है Wait. नहीं रहा रे भाई बेंच हाथ में ये सेम आ गया
गन स्विच किया था नहीं हुआ. Let's go for the another one. There's no. अरे ऊपर बंदे हैं. चलते हैं. इधर ऐसा कि बंदे चारों Very hurt in the motor. अरे बंदे इधर भी है. Yeah, that's what I'm saying. Let's go. The revived flight will arrive in 1 minute. अरे ये नॉक हो गया था. तुम ले लिया. Reload. Airdrop が接近. Quick, nice. Chip terminal is almost ready. अरे एक नॉक, एक शॉट. इधर है. ये भी उसको पुश करना हो. एक शॉट है उधर. कहाँ है? ऊपर इधर नहीं है. वो साइड पे. इधर वेट. मुझे मिला क्या वो नहीं. इधर ही गया वो. देख इधर जा रहा है. देख. हाँ रास्ते पे. चला रहा. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive. Arsenal. Let's go to the second drop. Right, or you go? No, wrong gun. Shit. Which one? Sniper? This one's still happening with you. Wrong gun. Yeah. Old things don't change. Hello, Sroz Play, yo. Welcome. चल बढ़िया. आप बताओ कैसे हो? हाँ. Are you streaming? Yes. Okay. Hi. Oh, yes. Dead. घर के अंदर है. निपी पूरा वीक है.
अरे नहीं भी पूरा वीक है, जा 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 आगे। हेलो फॉस्टिक, वेलकम टू द स्ट्रीम। इनविजिबल को ज्यादा मजा आ रहा है, किस लिए मजा आएगा? इतना जल्दी उधर भाग रहा है। Just shotgun near the house. वो हैकर है यार वेंचो, इतना जल्दी भाग रहा है इधर उधर। पीछे जा टैग ले स्कैन कर। अरे वो इतना जल्दी उधर उधर भाग रहा है वो वेंचो वो। अरे यार मैं आया भी। Airdrop incoming. आए थे क्या? अरे वो चार्ली स्किन वाला हैकर है लगता है। उधरता है वो ट्रक का विजय। चलो बाय, गुड नाइट। नींद लगी हो? हैं? चलो क्या लग गया? सो जाओ। ओके बाय बाय। नींद लग गया। गुड नाइट। बाय बाय। किसको मजा आ रहा है बोल रहा था रे तुम? वो बोल रहा कि इनविजिबल को ज्यादा मजा आ रहा है। फॉस्टिक। कौन पौष्टिक को? पौष्टिक आ गया है क्या? हाँ अभी आया। अरे सदमे से बाहर आ गया है क्या अभी? नहीं अभी भी सदमे में ही। सदमे में है, ब्रेकअप हुआ फिर दूसरे में घुस गया जाके। सही जा रहा है। और सराज कैसी हो? सराज का क्या स्ट्रीम नहीं है क्या? आज देखा नहीं स्ट्रीम। अरे यार आ गया सबीर। हेलो सबीर। मैं अभी स्ट्रीम पे जा रहा था। You were the jump leader. Good luck. बोल रहा है हाँ मैं अभी जिंदा हूँ। Hey soldier, the data cache कौन is बोल रहा है? nearby. Bring it back वही successfully for a जिसको reward. बोले थे कि है जिंदा। अभी जाके देखा पौष्टिक है स्ट्रीम पे। सराज स्ट्रीम नहीं की है क्या? सराज आज रेस्ट में थी। राइट सराज? इतना बिजी था आज सुबह से पूछो मत। बस पूरा थक गया। अभी तक तो पौष्टिक है स्ट्रीम पे। तुम सभी एक काम कर, क्या कर मालूम है? तुम जाके वो एक्सएलएथ के स्ट्रीम में ही सो जा। सुबह कबूतर आएंगे उठाने के लिए। सराज बोल रही है नो स्ट्रीम एज अवर वाईफाई केबल गॉट कट बाय माय रैट पेट रैट। उसका पालतू चूहे ने काट दिया था। बहुत लफड़ा है। You have a rat? अभी टाइम का बीच में इन लोगों का स्ट्रीम कट जाता है मालूम है क्या? बहुत लोड है। My MS is too high. Oh, I can understand. 120? 100. Yeah. 100? It's normal for me. When I'm playing with the Indian server, it's always like 130, 135. My normal is 40. Yeah, because it's Irani lobby, no? It's Iranian lobby. My normal is 47. But like when I play in a different server, my thing was like 80, 88.
चलो तुम लोग खेलो, मेरा कल ऑफिस है, बाय, सी यू गाइस सून. Okay brother, have a I nice think day. this is the Indian server, I think. Yeah, this is Indian. Because always when I play with my Indian friends, it's always like this. Oh, enemy. No, what is my ping now? 26. That red due to constructions by additional floor on our building. अरे तब तो ये घर में वृद्धि हो रही थी, एक और तल्ला बना रही है सरास घर में, उसे में तार कटी. अरे मार दो रे. Yeah. एक शॉट चाहिए. Enemy. magazine. एमो खत्म हो गया, 0 कुछ भी नहीं. फिर मारना कौन है? तभी तुम्हारे पीछे ही. जल्दी जल्दी रिवाइव देखता. मेरे पे है अभी. फिर मारा. हाँ देख रहा. हेल्प लेने को. इधर ट्रैक्टर के पीछे. किधर रिवाइव मार. फिनिश 0 नथिंग. वो रिवाइव मार रहा है बार-बार. 敵が近いわ. हां इधर ही. दो ही मार सकता है, बार-बार कैसे मारेगा वो? वही तो. अभी तो रिचार्ज भी हो गया होगा. कोई हील है क्या? निकला. आ गया, उधर ही आ गया. इसका तमाशा बहुत हो गया कल. Congrats on reaching 1.1. Thanks Raz. You also like close to 600. नहीं आई. अरे मिंसिया का याद आ रहा है इसको. क्या बोल रहा है? इधर है. मिंसिया नहीं आ रहा है बोलता है. अरे नहीं रे. चल बात झूठा. नहीं वो क्या हो रहा है यार? बांग्लादेश बोल के पूरा इधर घुसा हुआ है, और हम लोग को बोलता है कि हम लोग इधर नहीं, इसके चक्कर में रहते. तुम लोग उसके चक्कर में रहते, वो सब के हम नहीं रहते. देख रहे हो, ये सिर्फ दिखाने के, वो हाथी के दांत दिखाने के, खाने के आज देखा ना 3 लड़की के बीच में तुम अकेला. अरे तो जब 3 खेलने के लिए आ गए तो क्या बोलूं, नहीं खेले. और 3 तो ऐसे बोल रहे ना जैसे 3 अनजान थी. सब लोग तो वो मतलब वो उधर पतंजलि का प्रोडक्ट बेच रहा था रे, तीनों का बीच में. हाँ. अरे भाई, अरे मेरा पिंग बहुत ज्यादा जा रहा है यार, खेल ही नहीं पा रहा हूँ मैं. कितना जा रहा है? 132 133 जा रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ. अरे गाड़ी आ गई. टॉपर आ गया थर्ड पार्टी का. बाहर में यही लपड़ा है. पुलिस को चक्कर में तो ड्रॉप लेने गया. या हम लोगों को साथ में बैठ के खेलने को सीखना पड़ेगा. हमारा तो हमेशा टीम में बंदे एक जगह पे एक रहते. गाड़ी लो. देखो इधर से पार से दिखता है. हाँ इस लॉबी में मेरा फ्रेंड भी एक टीम का है.
बांग्लादेश का। उसको मार के बू करेंगे बू। हाँ बांग्लादेश। क्या इनविजिबल? दैट मिरान। उसको मार के करेंगे बू। देखने का ही वो तुमको भूख खाना। हल्के में ले रहा तू। चल 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 बैठ बंदा किधर है बोल के पता है। कहाँ है बंदा बोल। वो इधर है। ये एएम के वाला बोल रहा है क्या? वो बाघ दिखा है। इधर ऊपर घर दिख रहा है ना, इधर ही है पहाड़ पे। ड्रॉप पे बंदे हैं। ये अकेला है। स्क्वाड ऊपर है। दो है देख रहा है। गाड़ी ले जा बोल रहा हूँ। स्कैन कर अरे क्या भी चला है। अरे नाइस। ये था तुम्हारा दोस्त। नहीं होता क्या? नहीं जल्दी ये लूट के जा रहा है। जल्दी भाग, जल्दी जा बैकअप करने। उधर सामने कैरल ना फ्रंट ऑफ यू। हाँ ना अरे होम लैग मार। अरे मेरे यहाँ ये पिंग बहुत आई जा रहा है। ये आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। अभी तक मारी नहीं है। तुम हील करना भाई। तो हील करने के लिए पानी में मुंह में पानी डालना पड़ता है। इधर मेरे पे है। He's dead? Yes, you kill him. Oh, nice. अरे मैं तुमको लूटने को मिला, मेरा बॉक्स ही है क्या? हमने लूटे साबिर को। बस लॉन्चर है मूल्य। Don't go, it's my box. Oh, wait. Let's see what I want. कौन है? अरे डैमेज है। मार और एक। इसका ऐसा मारा भी डायमंड है यार। हां डायमंड। अरे यार ये तो अलग ही नशा में है इसका। लॉन्चर पिस्टल मेले सब है। Carolina. Yes. This number 4, you have all weapons diamond, all, even FHJ. Nice. Well, I have only one. He is always sleeping in the game. Although I have some, but I'm on only my baby CBR. Oh, it's still here, Siraj? Nice. Let's go. अरे यार मेरे को खेलने का ही नहीं हो रहा है। कुछ लूट भी नहीं पा रहा हूँ, हाथ में गन भी नहीं है। क्या हो गया? एमो चाहिए तो मेरे से ले लो। ड्रॉप पे। Nice. Next drop. Let's go. एमो चाहिए। Let's go for the arsenal. अरे मेरा इंटरनेट बहुत आई जा रहा है। Guys. Soldier. Let's go, soldier. Soldier गया। पहाड़ में उधर। Guys and girl, please. सारे सूट लग गया बंदर में। वो निकल रहा है।
सेलेक्ट किधर है ड्रॉप? मेरे को एक ड्रॉप लेना है। अरे 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 तुम गाड़ी में बैठना, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा यार। मेरे को एक ड्रॉप देना करा के। ऊपर में बंदा है। तेरा 4 मैन देयर। ओ ऊपर पूरा पहाड़ पे। अरे यार उधर बेटा अरे मेरे को इधर नीचे अरे लैग मर रहा है। अरे उछला जंप नहीं करता यार, जब करना पड़ता जंप। अरे इंटरनेट ही नहीं है यार, क्या My god, and my MS is very high. Even my also 132 showing, 132, 133. इधर आ गया। इधर कोई आ गया। इधर उधर पूरा स्क्वाड है ऊपर। तुम हो किधर? एक को नॉक कर देता अभी। इधर गया वो बता। तुम फालतू जगह इधर आओ करेगा तू। ये शॉट पीछे से मारा। अरे यार फिर ले लिया। एक का बेस। Let me get my. The car, I need a car. They are two there. I need a car. अरे तुम क्यों एक जगह पे रुक गए हो? वो बता मुझे। नहीं क्या? लैग मर रहा है फोन। नहीं तुम नहीं रहे, एक्सालियथ क्यों एक जगह पे खड़ा है? मेरे को ऐसा लग रहा है वो पहाड़ के ऊपर होगा। मैं तो इधर ड्रॉप। मेरा इंटरनेट सही नहीं है इसका। आप लोग कहा ये सब खाली जगह पे हो ना? What is this? Back to L. Smoke and run. Oh shit. Smoke. Wait. Direct behind. Behind me. Yeah, kill him. He's only one Okay, I now. need to fight. Wait, no, he's on 2. Yeah, now 2. It's 3 now. Behind you. It's 3 now. Oh, 3 now. मध्य दीवार के बीच में खड़े रुकिए, जाएगा टकरा जाओगे। वो दीवार के एंगलर में हो, दीवार को बाहर से ले सकते हो। Yeah, but wait, 30 seconds, don't go now. I'm in a hard place to take my dog. Oh, lucky. Don't go now. उसका चक्कर में जाके हम लोगों का वाट लगाने वाला है। नाइस। अभी आके भी क्या करेंगे बिना लूट को, बताओ। You think I can take my box? Maybe. No. Maybe. No, there are lots. Oh, they are there. अरे माँ। उधर बंद है। रुको। You safe, lady? एमो चाहिए? किनेटिक ले लो, किनेटिक। Sorry. What? Kinetic, safe there? Where are you? Oh, you are still here. You guys here. Nice. Yeah.
ऊपर बंदे है क्या एक्सा? नहीं मेरे पास नहीं है, ऊपर में होंगे। पहाड़ पे ऊपर मैं देख क्या हो क्या, मैं चेक करके आता हूँ। वेट ड्रॉप आ रहा है नहीं ड्रॉप आ रहा है, चल ड्रॉप में जाए। हाँ इधर ही है। हाँ बंदे हैं। Inside. He's inside. Wait, don't go, maybe shotgun. Nice. And more. अरे स्नाइपर आ गया अभी तो। हम लोग हाई ग्राउंड पकड़ते हैं ना, ये हम लोग ऊपर नीचे बंदे और जोन के एज पे भी। हाँ वेटिंग है ये। ठीक है क्या एक कदर में। हाँ दिख गया ऊपर है। ओ टू शॉट। So we one shot, almost dead है वो। Oh wow, it's shooting me. Don't know where. यार गेम In the. Oh I don't have healing. You guys have heal? I have black block only. Take. दोनों okay. We still need. I have 2 more. एक ही बचा है। नीचे कूद गया। Toxic. Oh, mission, ambition, all unrolled. Okay, I'm gonna play the last one, okay? Then I'm going to multiplayer. Okay. You were the jump leader. Good luck. कुछ बोल रहे थे क्या? Hello. Namaskar. स्वागत है आपका आइसोलेटेड। कुछ बोल रहे थे क्या इनविजिबल भाई? नहीं है, मेरा पिंग का बहुत लोचा हो रहा है। बाय स्ट्रॉस, गुड नाइट स्वीट। गुड नाइट स्ट्रॉस। अभी तो बस तुम्हारा पिंग का लोचा हो रहा है। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर। Yeah, and take care your cables, like save your cables को क्या चूहा काटा बोलता है? चूहा काट के। Welcome to Battle Royale. The match is about to start. और कुछ बोलना है इसको? क्या? क्या बोल रहे? Good night to invisible. अभी कब फिक्स होगा वो कार? कुछ भी। तुम्ही तो बोली चूहा काट लिया मेरा ये। हम लोग सोचा हाथी काटा है। हम लोग को क्या पता कि कौन काटा भाई, हम लोग क्या जानते हैं बंदे। शायद यही नींद में काटी है लगता है।
my god, a lot. Oh, whoa, there are a lot. 2 teams here. Invisible भाई. Reviving. Two knock, reviving. कल ही अरे उड़ना भाई क्या कर रहे हो कल ही अच्छा कल सही हो जाएगा हाँ अभी समझ में आ गई है सिराज ही काटी है वो दांत ये गुस्सा कहीं मरी होगी किसी से और गुस्सा में ये पूरा दांत से काट दी मोबाइल में देखती है safe. More people are there. Oh no, all clear I think. अरे इधर से कोई भाग रहा है साबिर का पिंग कितना रहा है रे there is people scare one more spot bye 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 मेरा पिंग नमस्कार शॉट हुआ here it's another house yeah this house you are still looking at wrong house घर के अंदर कैंप कर रहा है one behind also मत जा हमने दे दो है घर के अंदर है नहीं स्नाइपिंग कर रहा है बंदा इधर पता है on your left side you have one only at your left side you have other be careful हाँ दिख रहा अरे मैं जंप भी नहीं कर पा रहा हूँ अरे एक लीग मर दिया दो को मारा एक लीग मर दिया one guy is here अरे I got a drop कोई स्नाइप कर रहा क्या हाँ इधर आ जाओ इधर कोई नहीं है तो अभी आ रहा है ना आ रहा है कोई आ रहा है nice साले उसको भी रिवाइव कर गया और मैं भी कुछ बोल रहा है साले उसको रिवाइव कर गया अरे साले कमीना सड़ी के हाँ ना चले साले मर बोल रहा ना चले साले इमोट मार रहा हूँ ना हाँ बोल रहा ना चले साले हम भी नाचेंगे अभी तो नहीं देखा होगा कि शॉट में गिरा के मारा था स्नाइपर रुकना मैं भी आऊंगा ना नाचने तो बंदा मर गया अभी तक यही है बोल रहा है मैं भी आ रहा हूँ मैं भी नाचूंगा इसके बाद जेटर जे चाहिए क्या तुमको क्या वो न्यू स्नाइपर
अरे हाँ चाहिए। इसके पास ये आ रहा है इसका बंदा। देगी मेरे टैग पे। अरे ये क्यों नहीं आ रहा? बोल रहा है वो मैं इसका वो ऑल पे बोल रहा है। सुना यहाँ से आने दो एक बार। नहीं मैं बात नहीं करता पूरा। नहीं आ रहा। Don't go outside. अंदर नहीं है, बाहर से भी निकलोगे तो आ जाएगा हाथ में। बोल रहा है कि बाहर से भी टैग लोगे ना तो आ जाएगा। I need ammo. Oh my god, big confusion. ये लड़की था ये लड़की था। इधर है। Bildschirm, मला check Bildschirm. गांड मारो सालो। Let's go. Oh भाई। तो बोल रहा था ना कि इसका टैग हाथ है कसम से। अरे ये वो खुद मरवाया अपने टीममेट को, बोल रहा है कि मेरा बाहर ही है, तुम लोग बाहर से ले लोगे, आ जाओ। एक बंदा बचा है। नहीं सब मर गया। नहीं मारा। अच्छा हाँ लास्ट। Sorry. लास्ट वाला नॉक हुआ था ना। नहीं नॉक नहीं हुआ है रे, वो अभी भी बचा था, वो एक बंदा बचा है। हाँ मतलब नॉक सैनिटेरियम। वही बोल रहा था। सैनिटेरियम चलते हैं। My friends all are toxic. Oh, why you didn't? Mission, ambition, all There is a car. What happened? अरे पानी में टूट गया। Whoa. Car need a wash. I think you guys was dirty. You guys are a bad driver. You car keep your license. Let's go. I can pick one. Let's go sanitarium. Hello Sabir, welcome to the stream. Anas Khan. वो पीछे लड़की बैठा है ना, इसलिए वो ऐसा लग रहा है असली में लड़की पीछे बैठी है, पूरा नर्वस हो गया। असली जिंदगी में बैठा। अरे सबीर लाली लगैले लाली। हाँ? लाली लगैले। इसका क्या मतलब? नहीं समझेगा तू। बच्चा है अभी। Is everything taken here? They took everything. Yeah, let's go. We are here for the drop only. And we took the drop. तुम्हारा गाड़ी किधर है? तो मैंने go overgrown. मेरा गाड़ी उधर है। ड्रॉप में कुछ है क्या? मैंने तो एक शॉटगन ले लिया। कुछ भी नहीं है, पूरा खत्म हो गया। तो मैंने go guys overgrown. ओवरग्राउंड का सारा एक ओवरग्राउंड अगर जा सकते हैं तो जाना है। चल इधर 1 मिनट में पूरा 50 बुलेट डाल देंगे हम। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो सोल्जर। नहीं है रे, चल रही है हराम है। वो ड्रॉप हो जा रहा है। गाइस पूरा ड्रॉप में पूरा लूटा हुआ ड्रॉप में जाके घूम रहा है। हाँ डैमेज देख देखो। अरे वो बैट गर्ल थी ना जो ईरानियन से खेल रहे थे सुधा, वो कल खेल रहे थे तो एक हम मार के पहले 2 को मार के तो वो 1 को मार के मर गई,
तो एक नंबर 2 था तो आ रहा था तो वो ऐसी गाड़ी चला रहा था वो भी मर गया तो बोलती है ना नंबर 2 noob. What? Number 2 what? No, I'm not not in this game. Like we are playing yesterday, and one girl, there is the girl named Bad Girl. So okay. I died and she died also. But the number 2 guy is there. He going to save us and he died also. Then he said like number 2 noob. Okay. Let's go there. क्या बोल रहे सर? मेरा इंटरनेट नहीं है, इसका इंटरनेट मेरे से भी पूरा है. ये जी गाइस, इधर आ जाना, इधर ड्रॉप है. अभी हॉटस्पॉट ऑन करो, हॉटस्पॉट के बाद वाईफाई नहीं यूज कर रहा क्या? मोबाइल डाटा अभी तुम्हारा स्नाइपर से दो स्नाइप दे देना क्या करो, फट जाएगा. हाँ मैं वही स्नाइप लेके जा रहा हूँ, स्नाइपर लेने जा रहा हूँ. मेरे को दिख भी नहीं. So we have three shoppers. Yeah, you have to cover me, not me. You be gentleman. Wait. Sniper. Sorry, chopper put where? Where is the chopper now? Attention, please. Let's go to the other job. Let's go. मेरा पार्टनर है. Whoa. What the heck? Guys, we are teammates. What are you doing? Oh, someone here. Oh. कूद गया. One dead, one knock. I don't have ammo. I have only 35 bullets. I'm in trouble. Oh shit. अरे ये पूरा वीक है. अरे इधर क्या गया? अरे यार इधर से भी और एक स्क्वाड आ गया. वो तो डेड हो गया. One here too. Other is here. Behind this mountain. स्मोक डालना थोड़ा. अरे वो मार रहा है भाई. इधर भाई कान फोड़ देंगे. नेट ब्रेक दिया. Where are you guys? चारों तरफ गाड़ी लेना है, गाड़ी ले पट से. पूरा चारों तरफ से आ रहा है. चारों तरफ से. हाँ पीछे से भी आ गया, लेफ्ट में आ गया. मैं वो घर का मेरे को तो लगा था वो डार्क शील्ड था ना, इसके लिए नहीं मार पाएगा. I'm going to pick you guys dog. Oh, last revive flag. What the heck? 56 seconds. स्नाइपर पकड़ के भाग. लास्ट रिवाइव फ्लैग. गाड़ी से नेट से फोड़ दिया. एक्सालियत का रिकॉर्ड तोड़ दिया. नहीं चलते में नहीं ना. What the heck? एक्सालियत का रिकॉर्ड गया. अरे नहीं तो चलते गाड़ी से ना हम. चल भाग साला. अरे चलते गाड़ी में तो हम बैठे ही थे. वो चलते जो मारता है, चलते गाड़ी में जो उड़ा देता है. किसी ने देखा तो नहीं स्ट्रीम. Okay guys, I'm going. Bye. I'm going to multiplayer. Bye. Night. Thank you for the games. Bye. Good night. Bye. चल एक्सा मैं भी जा रहा हूँ यार. जा रहे हैं.
खेलो तुम, वो आएगा तो थोड़ा बाद में आएगा, अगर रहेगा तो ऑनलाइन। खाना खाना है, भूख लग रहा है। हाँ चलिए खाना वाना खा लीजिए। चलो सभी भाई। ओके भाई।